An investigation started before taking the record from the concerned taker. And then the more interesting point is that there is nothing on the record, no application to the magistrate for permission for reinvestigation or for requesting for withdrawal of that order or to modify that order or to set aside that. No application was submitted to the magistrate. And most important, the important point is that there is no written order. This is the answer of the query your lordship has posed. No order, written order is on the file regarding reinvestigation. No order. And their most important witness, I will refer when I will go. Is this a legal requirement? Of course, sir. No, can you also, if you assist us on this point? Sir, I will. But you will later. Okay, right. A specific question was asked from this investigating officer. He said, I was verbally directed by my officer to you conduct the investigation and there must be some order. We might be lying with that officer. So then it is a different story. Then, sir, incomplete challan was prepared on 11th of September 1977, submitted before the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. And in the interim challan, there were 7 accused. Their names are mentioned at page 3 of my note. Number 1, Zulfikar Ali Bhutto. Number 2, Sheikh Masood Ahmed. Number 3, Mia Muhammad Abbas. Number 4, Ghulam Hussain. Number 5, Ghulam Mustafa. 6, Arshad Iqbal. 7, Iftikhar Ahmed. Then the order of the magistrate, on the same day the magistrate passed an order on the incomplete challan and the matter went to the court of session and that order was also passed on the same date. I will refer to the order. And sir, complete challan was submitted on 18th of September 1977 wherein accused were 5. Masood Mahmood and Ghulam Hussain. Their names were excluded as they became approver in this case. Charge was framed on 11th of October 1977 under section 120B Pakistan Penal Code, 302 PPC read with section 109 and 301 PPC and under section 307 read with section 109 PPC. The prosecution witnesses in total were 41, defense witnesses are 4, none from the side of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, and he boycotted the court trial proceeding at a particular date that I will also mention. Then the judgment of the High Court is PLD 1978, Lahore 523. All were convicted under different provisions of law, but they all were sentenced to death. Then the appeal came to this court, and it was decided on 6th of February 1979, the reported judgment, PLD 1979, Supreme Court 53, 7-member bench. Initially it was 9-member bench. Yesterday your lordship has been informed as to how the 2 judges who were initially part of the bench but they did not remain, one because of health, other because of retirement. So the 4 judges, they dismissed the appeal. Slightly they modified it to the extent of 301, to the extent of certain accused, but they dismissed the appeal and death sentence was maintained. But the 3 honorable judges, and they allowed the appeal to the extent of Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas, but to the extent of remaining, their appeal was dismissed. So this is, in brief, is the prosecution case. And now, sir, if you can give one spare, if you have more copies, I would like to give it to the Attorney General and to... Okay, fine. Please proceed, Ji. Sir, please.
دے دیے No sir, I will read the FIR. Complainant وہ بھی دے دیجئے, قصوری صاحب کو بھی دیجئے. دے دی قصوری صاحب. یہ لے لیں. Sir, the complaint which has been signed by Mr. Ahmad Raza Kasuri, you will find it at page 310 of volume 7. Page. You are referring to the original record now? Which volume? Which volume? Which is before your lordship? آپ نے دیا ہے نہیں سر نہیں, وہ میں نے تو اس کی بیٹر کاپی آپ کو دے رہا ہوں, یہ بیٹر کاپی دے رہا ہوں. But the file your lordship wanted to see where the original volume کون سی کیا volume کون سی کمپلینٹ کی بنیاد پہ ایف آئی آر ہے نا جی. ایف آئی آر وہ اتنی کلیئر نہیں ہے, وہی اس کا وہ اگر where is that it is sir at page 310 volume 7. یہ دے دو, یہ دے دی volume 7 volume 7. یہ سر بڑا ہی اس کو بڑے ہی میں I don't have the words to use کس طرح اس کو 310 اس نے وہ پڑھ لینا پھر اس میں نہیں ہے ہے سر volume 7. وہ volume غلط لکھا ہوتا ہے نا جی, یہ بڑا ریکارڈ جو ہے نا اس کو پراپرلی انہوں نے بنایا. اردو میں جو لکھی ہے جی سر وہی ہے. کاپی ہے ایف آئی آر کی اس میں نہیں کاپی نہیں ہے سر, میں آئی ایم ریفرنگ ٹو دا ایپلیکیشن. یہ اردو یہ والی یہ والی بالکل یہی والی. ہاں یہ پڑھ لیں ذرا. میں اس کی بیٹر کاپی دی ہے نا جی, میں وہ پڑھوں گا. اچھا I have supplied the better. 310 So your lordship have got this? 310 جی we got it. Shas میں just. But we don't have the better copy. 301 یار دونوں. Have you given it now? Yes sir, yes. وہ بیٹر کاپی دے دیں ہمیں, دوسری دے دو. چلیں سر نہیں وہ بڑی ضروری ہے, بیٹر کاپی آپ دیں نا. لیجیبل کاپی ہم پڑھ سکتے ہیں, quite clearly written آپ پڑھیں. بہت صاف لکھا ہے بیٹر کاپی ہے سر. کدھر ہے وہ جی بھی ہے. اب کسی اور کو دے دیں, سارا کام نہیں کر پا رہی ہیں تو کسی اور کو دے دیں. ایک آدمی ادھر, آدھے ان کو دے دیں, آدھے ان کو دے دیں. جی بتا دیں. پڑھوں جناب پڑھوں. بس ایک اگر آپ برا نہ مانیں, مجھے پسند ہے لفظ لیجیبل کاپی. بیٹر سے لگتا ہے کہ کوئی امپروومنٹ آ گئی ہوگی. اب وہ یہی ہم یوز یہ کرتے ہیں, بٹ ٹھیک ہے آپ اس کو لیجیبل کہہ لیں. جی بسم اللہ. ہم ایک ہمارا جو پریکٹس ہے اس میں ہم وہ آئی نو وہ ڈیولپ ہو چکا ہے, مگر ہم اس کو کوشش کریں. ہاں پڑھیے مورخہ. جی ایک سیکنڈ سر, وہ جسٹس شاہ از لوکنگ فار دا کاپی. جی پلیز یو گاٹ اٹ سر. جی وہی چیز ایف آئی آر میں بھی لکھی ہوئی ہے. جی بالکل وہی ہے, یہ جسٹ فار یور کنوینئنس سر, اٹ از فار یور کنوینئنس. یہ پڑھ لیں. مورخہ 17/1/1972 کو آج سے قبل قصور میں مجھ پر بذریعہ فائرنگ قاتلانہ حملہ ہوا اور مجھے گولیاں بھی لگی, جس کا مقدمہ تھانہ شہر قصور میں درج ہے. اس کے بعد مورخہ 24/8/1974 کو اسلام آباد مجھ پر خودکار آلہ سے حملہ ہوا, جس کا مقدمہ بھی تھانہ اسلام آباد میں درج ہے, جن میں مفصل حالات درج ہے. پرسوں 9/11/1974 کو مجھے محمد حنیف الیکٹریشین ٹیوب ویل ماڈل ٹاؤن سوسائٹی نے بتایا کہ ایک یوم قبل 4-5 آدمی میرے گھر کا پتہ دریافت کر رہے تھے اور میری تلاش کر رہے تھے. آج قریب 12:30 بجے رات میں ماں اپنے والد نواب زادہ ایم اے خان, میری والدہ اور اپنی خالہ مسز آغا محمد مہدی اپنی کار نمبری LEG 9495 پر سید بصیر حسین شاہ کی کوٹھی واقع شادمان کالونی کی شادی سے فارغ ہو کر کوٹھی سے شاہ جمال کی جانب جا رہے تھے. میری کار دائیں ہاتھ ڈرائیو ہے, جس کو میں خود چلا رہا تھا. میرے بائیں طرف میرا والد نواب زادہ ایم اے خان, میرے عقب میں پچھلی سیٹ پر میری والدہ اور ان کی بائیں جانب پچھلی سیٹ پر میری خالہ بیٹھی تھی. جب گول چکر کے قریب کار آئی تو اچانک دائیں طرف سے میری گاڑی پر فائرنگ شروع ہو گئی, جو تقریباً 100 گز تک میری گاڑی پر فائرنگ ہوئی.
चंद एक गोलियां मेरे वालिद को सर पर लगी, उनका काफी खून बहने लगा और कार दाईं तरफ से चलनी हो गई जिसके शीशे टूट गए। मैं अपने वालिद को कार में सीधा अमेरिकन हॉस्पिटल UCH गुलबर्ग ले आया, जहां पर मेरे वालिद फायरिंग के जख्मों की ताब ना लाकर जान बहक हो गए। ये फायरिंग खुद कार आला से की गई जिसमें मेरे वालिद नवाबजादा MA खान कत्ल हो गए हैं। ये फायरिंग मुझ पर सियासी वजूहात की बिना पर कराई गई है क्योंकि मैं कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ का मेंबर हूँ और तहरीके इस्तिक़लाल का, जो कि मुल्क की सियासत में हुकूमती पार्टी का डट कर मुकाबला कर रही है, मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ और गवर्नमेंट पर कड़ी तनकीद करता हूँ। याद रहे कि जून 1974 में कौमी असम्बली में मिस्टर भुट्टो ने मुझे मुखातब करके कहा था कि मैं इस शख्स से तंग आ चुका हूँ, ये शख्स मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ये अल्फाज कौमी असम्बली के रिकॉर्ड और अखबार बाद में मौजूद हैं। No sir, this FIR, as your lordship have seen, it has three parts. Number one is the background of the incident, where the complainant says that he was fired at in Kasur in 72 and then Islamabad in 74. Number two is the narration of the events. Okay, how did this incident took place? And number three is his assessment, his opinion, his guess or his version that why this firing was made and who is responsible for that. These are the three portions. So far as first portion is concerned, that doesn't need much comments at this stage, but I will touch it later on. So far as I think who in those two FIRs that you mentioned in the first part, yes, is it on the record who was nominated there? I said I tried my best. I could not get copy, but from the record it emerges that Mr. Bhutto was not accused in both those FIR. He was not. There was some unknown person? So far as the FIR at Kasur is concerned, I believe there was some man group who was his political opponent, or within the party they were opposing each other. They were named. In the second FIR, which was at Islamabad, none was named. Have you read Justice Shafiur Rahman's report? Yes, sir. मैं आ रहा हूँ सर, वो सारी Okay, ठीक है. पता है क्या फिर उसमें उन्हें जिक्र किया. सर मैं पढ़ दूंगा वो सारा. वो मेरे पास है. मैं चाहता हूँ जरा आप थोड़ा सा चीजें आहिस्ता आहिस्ता सबकी बात क्लियर होती जाए कि है क्या केस. वो मेरे पास है. मैं जब भी कहेंगे तो अभी पढ़ देता हूँ, मगर वो फिर सीक्वेंस टूट जाएगा. Now I am referring to the second part of this FIR, and I will very fairly I will say this is the very good narration of the events so far as events are concerned. Your Lordship might have come across many FIR, and particularly in Punjab, we specifically attribute injuries even at night time. A fire hit in the head, B fire hit on the left leg, C fired hit in the chest. So this is the routine FIR, but in this FIR, very natural relations of the which has been described. And this has not been disputed anywhere. The fact that this incident took place at Shadman Chowk has not been disputed. The fact that car was being driven by Kasuri Saab has not been disputed. The fact that in car his father, his mother and Khala were sitting has not been disputed. The fact that his car was fired at has not been disputed. Fact that his father received the firearm injury, it has not been disputed. The only thing is that he says he received a number of bullet injuries. Either there is only one. Did any of the other occupants receive any? No, none. But sir, even I will give this allowance to him, because at that time when your father is hit and you are narrating the events, so he could not see how many injuries on his head. Obviously blood was oozing, so that is not much important. If he said he received injuries and there is only one injury, I think this is not important point of the case. अगर इसी ground पे आप bail देते थे, पता नहीं मैं क्या करता.
نہیں اور دوسرا چلیں پلیز پروسیڈ جی. اب اس کی ایک اور ایسپیکٹ دیکھیے. In this FIR, so far as firing is concerned, none is named. As my lord was asking the question who was named in the FIR, none is named in the file. What weapon was used, it has not been described. How many fires were shot, it has not been mentioned. So these are the salient feature of this affair, but I will call it. Again I will say, it's a very natural narration of the event, which is expected from a person who is in such a situation. So it is based on the suspicion that whatever he said in the National Assembly. No, that is the subsequent. He said what he said in the National Assembly. He just gave an incident of the National Assembly. He has not referred to any conspiracy. No direct allegation. No allegation. And but I don't want to much time spend on this aspect of the matter because it's not that relevant and that material. And even in my assessment, the whole evidence of Qusuri Sahab is not relevant. مگر دھمکی تو ان کو دی کہ ان کو یہ مجھے پسند نہیں ہے. نہیں وہ بات تو یہ نا جی کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے جناب. بات ہے ایف آئی آر میں ایسا لگتا ہے میں عرض کرنے لگا ہوں. نہیں آپ بات سن لیجیے. یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹیک ان پہ ہونا تھا. انہوں نے لکھا ہے میں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کار تھی. نہیں رائٹ ہینڈ لکھا ہے. رائٹ ہینڈ لکھا ہے, لیفٹ نہیں لکھا. وہ اٹیک رات کو 12 بجے جناب, وہ پھر لیفٹ رائٹ کا نہیں پتہ چلتا. اور دس واز 74 کو اسٹریٹ لائٹ کا بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہے. وہ ایسا ایشو نہیں ہے. میں کیونکہ مائی لارڈ ہے سیٹ کہ جی ٹائم کا مسئلہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا جو وقت ہے نا جی اس کو ہم بعد میں ڈیل کر لیں گے. پھر وہ انویسٹیگیشن میں نے بتا دیا. اب وہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو پیج بھی بتا دیتا ہوں. یہ پیج ہے 39, پولیس فائل نمبر 6 آپ کے پاس ہے جی. اور ایک تو پولیس فائل ہے نا جی جو ہاتھ سے لکھی ہے, یہ بیٹر کاپی ہے. نکالو پیج. پیج 39 یہ چلان ہے. نہیں سر, یہ وہ چینج آف انویسٹیگیشن کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے کہا نا جی کہ پولیس انویسٹیگیشن لوکل پولیس کرتی رہی, پھر اس کے بعد یہ سی آئی اے کو ٹرانسفر ہو گئی. مل گیا جناب کو پیج. پڑھوں میں؟ نہیں ضرورت ہے. آپ کو پتہ نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹھیک. نہیں میرا مطلب آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے. اس میں صرف یہ ہے, میں خاص بات ہے تو بتا دیں. میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ آرڈر فلاں کے تحت یہ سی آئی اے کو ٹرانسفر ہوگی. اگر جناب نے پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ چالان پڑھنا چاہتے ہیں. اگر چالان, وہ چالان سے پہلے میری گزارش یہ ہے, اب بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ میں جناب کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کلوز کیسے ہوئی, کس کے آرڈر سے ہوئی, اور کس طرح ری انویسٹیگیشن ہوئی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ اینڈ یور لارڈشپ ہیز فریزڈ اے کوسچن کہ in what circumstances this investigation, re-investigation started. This is a very important point. I need your kind indulgence on this point. It's a very, very important point. No, sir, your lordship kindly see this close of investigation, closure report prepared under Rule 25.557. 25.57 and Police Rules 1934. The form is 25.572 and it was prepared by Abdul Hamid, and that is available on page 105 of this file number 6, the same file. جی مل گیا سر؟ مل گیا. یہ پڑھوں سر؟ 105 یہ تو مجھے ایف آئی آر نظر آ رہی ہے. نہیں سر, نہیں ایف آئی آر نہیں ہے. فارم رپورٹ خاتمہ زیر دفعہ 173. وہ 173 میں یہ رپورٹ وہی بنتی ہے. بیسیکلی رول اس کا ڈفرینٹ ہے, مگر اس کی باڈی میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, اگر اجازت دے تو میں پڑھ لوں اس کو.
اگر آپ سمجھتے ہیں پڑھنا چاہیے بڑا ضروری ہے. پڑھیے. اس میں نہیں ملے گا سر, یہ پولیس رولز ڈفرنٹ ہیں. دونوں ہم دیکھ رہے ہیں, میں دونوں باتیں 173 ہے رپورٹ انویسٹیگیشن کی. وہ یہ رپورٹ کے لیے ایک پرٹیکولر سیکشن ہے. آپ کی آنکھیں بہت تیز ہیں, میں سمجھا آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی آئیے سر, اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہ میں ریلیونٹ پڑھوں گا سر. جی پہلا تو یہ ہے نا, یہ جو پہلا پیرا یہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ یہ سارا ایف آئی آر ہے. اب میں سیکنڈ پڑھنا چاہوں گا. ہر پہلو پر تفتیش ہوتی رہی. آج تک کی تفتیش سے مقدمہ حاضہ میں کوئی سراغ ملزمان نہ ملا ہے. مقدمہ حاضہ میں اب تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا ہے. مقدمہ حاضہ کافی درینہ ہو چکا ہے. درینہ مطلب سر پرانا, I believe it's a Persian words. درینہ ہو چکا ہے, جس میں سراغ براری کا کوئی فی الحال امکان نہ ہے. مقدمہ کو مزید زیر تفتیش رکھنا محض بے سود اور توسیع الوقتی ہے. لہذا مقدمہ حاضہ میں رپورٹ قائمہ بصیغہ عدم پتہ, یہ ہے جناب وہ جو بصیغہ عدم پتہ, نو کلو نو ٹریس, مرتب کر کے بمراز سماعت ارسال ہے. بعد ملازہ مصر مقدمہ حاضہ کو عدم پتہ داخل دفتر فرمائے جانے کا حکم تحریر کیا جائے. یہ تفصیل لکھی ہے سر. اور اس کے بعد یہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ اس کے مقصد ہیں ڈی ایس پی کے دفتر, اور اس کے نیچے ایس پی کے ہیں 24/4/76 کو. اور پھر بالکل نیچے آپ دیکھیں گے تو میجسٹریٹ صاحب کا آرڈر ہے. یہ 9/5 نہیں سر, نہیں 3. یہ کس کا ہے 9/5 کس کا ہے؟ یہ اندراج شدہ ہے جی, یہ تو اندراج انڈورسمنٹ ہے. ہاں 3/5. اور اس کے اوپر میجسٹریٹ صاحب لکھتے ہیں حسب استدعا پولیس مقدمہ بصیغہ عدم پتہ داخل دفتر ہوئے. This is very important. So this investigation was closed by the order of the magistrate. The police just recommended. یہ جو ہر پہلو کا لفظ دیکھا گیا اس طرح, رائٹ, ہر پہلو سے مراد وہ جو کانسپیریسی وغیرہ تمام شامل. ہر پہلو, they said we have seen every aspect of the case from different angles. No clue could be. Yes, this was their opinion at that time. But the point which I want to impress is that this was the order of the magistrate. The police just prepared the report, and as required under the rules, it went to the magistrate after it was signed by the DSP and SP. And then magistrate passed the order. This is a very important point. This order was challenged anywhere? No. یہ آرڈر آج تک انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. جی بالکل انٹیکٹ پڑا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بائسنس ظاہر کرتی ہے without being satisfied the order of the magistrate. سے بھی اگلی چیز پہ وہ چلی جاتی ہے. اب باعث کا تو اردو ترجمہ مجھے نہیں پتا, مگر اگر آپ مجھے اردو میں پوچھیں گے تو یہ بددیانتی ظاہر کرتی ہے. باعث تو بڑا سیولائز سا ورڈ ہے نا جی. بدنیتی نہیں, باعث اور چیز ہے. اب I don't know the appropriate word in Urdu. تعصب, yes, وہ تعصب ہے. باعث تعصب ہے. This is not باعث, this is بددیانتی. یہ ایسپیکٹ کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا یا نہیں؟ نو, میں نے آپ کو آبزرویشن, کیونکہ اتنی لمبی ججمنٹس ہمیں نہیں پتا سر. وہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی تو میں نے آبزرویشن آپ کو پڑھ دی اس پوائنٹ پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کیا گیا اور اس کے بعد یہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن شروع کر دی. دیٹس آل. کو پڑھ لیجیے گا. لیکن میجسٹریٹ کے آرڈر کا تذکرہ نہیں کیا. لیکن آپ کے خیال میں جب یہ چالان آیا تو وہ تو میجسٹریٹ نے اس کو انڈورس کیا, تو ڈونٹ یو تھنک اٹ واز این امپلائڈ؟ نو سر, چالان تو ایک سبسیکوینٹ سٹیج ہے نا, اس کی تو ریکوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. انڈورس نہیں کیا اس نے. آپ سے اس کی بات کر رہے ہیں, اس رپورٹ کی. آپ دیکھیں نا, یہ آپ پیج 4 پہ آ جائے نا. نہیں 4 اس کو چھوڑے سر. ہاں, آپ ایک چیز آپ کی بات درست ہے کہ اگر میجسٹریٹ نے ایک چیز کو کلوز کیا ہے تو اس آرڈر کو ان نے
it had to be set aside, yeah, it had to be recalled. Yes. That wasn't done. یہ کہا جا سکتا ہے جس سے ہم آپ کی اس میں ہم وہ مانگ رہے ہیں اسسٹنس کے ٹھیک ہے there was no recall of that order, but what about جب چالان دوبارہ سے آیا اور وہ آگے جائے گا کمپٹنٹ کورٹ کے پاس میجسٹریٹ سیشنز کو بھیجے گا تو اس نے وہ چیز دیکھا will that not compliance تو نہیں ہوئی پھر. No sir, no, magistrate can't do anything to a case which is exclusively triable by the court of session. He cannot pass any order except that this file be sent to the court of session. Yes, this is for the session court, and from session court this case went to the high court. That stage will come later on. For the time being, my submission is that this reinvestigation, I will go further how it started. I will show you the documents. This order was not challenged. There is no mention of this order either in the judgment of the High Court or the Supreme Court. There's nothing. ملک صاحب اس میں ایف آئی آر داخل دفتر کنسائن ٹو ریکارڈ ہوا ہے, کینسل نہیں ہوئی ہے ایف آئی آر. میں یہی عرض کر رہا ہوں, ای میں گئی نہ سی میں گئی. نہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اور دوسرا ایک چیز یہ پھر فرمائیے گا کہ اس میں پھر ری انویسٹیگیشن کا کوئی آرڈر ہوا؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ری انویسٹیگیشن پہ تو ابھی ہم آ رہے ہیں. پہلے تو یہ پوائنٹ کلیئر کر لوں میں کہ یہ آرڈر کیا کس نے کلوجر کا؟ میجسٹریٹ. اب اس کو ری اوپن کرنے کے لیے اٹ از کوسچن آف کامن سینس کہ یو ول گو ٹو دا میجسٹریٹ صاحب, وی ہیو دس فریش ایویڈینس اینڈ کائنڈلی گرانٹ. وی گاٹ دی پوائنٹ. نیکسٹ پوائنٹ صاحب ان کو بھی تو جواب دینا ہے اگر اجازت دے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایف آئی آر کینسل تو نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. ری انویسٹیگیشن کا آرڈر ہونا ہو سکتا ہے. ری انویسٹیگیشن واز پرمیسیبل بٹ of course under the provision of law you have to follow a procedure with the permission of the magistrate. Yes, quite right. This is what you are. Quite right. As my Lord Justice Yahya was asking, the magistrate at the time of submission of challan is not required to examine them. نہیں, یہ سب کا مقصد یہ تھا کہ جو subsequently ultimately چلان جب آیا, اسی کی بات کر, اگر اس وقت جب چلان آیا تو جب وہ آٹومیٹکلی سیشن کورٹ میں چلا گیا, it doesn't amount to endorse the second investigation. Not at all. Not at all. اس میں تو یہ چالان جب آیا میجسٹریٹ یہ تو کچھ وہ کرے گا نا جب آپ سر یہ تو سچویشن آئے گی نا کہ اگر آپ ملزم کو بلاتے ہیں تو وہ یہ پوائنٹ ریز کرے گا نا, میجسٹریٹ کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. نہیں انہوں نے تو دیکھا نہیں, ملزمان تو تھے نہیں میجسٹریٹ کے پاس. اینڈ ایون دے ڈڈ ناٹ گو ٹو دا سیشنز کورٹ. یہ تو اب اگلی اسٹیج آئے گی, پہلے میں خیر اس کو ذرا ڈسکس کر رہا ہوں. آئی ایم کلیئر ناؤ سر؟ جی تھینک یو. Then sir, how this re-investigation started? وہ میں نے آبزرویشن آپ کو بتا دی. پی ایل ڈی 1979 سپریم کورٹ 53 پیرا 9 پیج 61 پہ آبزرویشن ہے کہ how this was closed and how the re-investigation started. Your Lordship may read it. اب ٹائم کا پرابلم ہے جناب, میں اب اگر کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں. اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے مجسٹریٹ کا ذکر ہی نہیں کیا. نہیں ان کو بالکل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کلوز کی ہے ڈی ایس پی نے آفٹر گیٹنگ اپروول فرام دیئر پولیس ہائرارکی, آئی جی, ڈی آئی جی, whatsoever it is. Would the complainant know that the investigation has been closed? I don't know, sir. I don't know. And Malik Saab, on who's saying this and re-investigated started? Sir, please, I'm now submitting, I'm coming to that point. I'm coming to, it's a very important question my Lord has asked, but now I am moving towards that. نہیں ٹھیک ہے, وہی جی. اب سر وہ ایشو بھی ہے ٹریبیونل والا, بٹ دیٹ آئی ول ڈیل سبسیکوینٹلی. وہ جو ٹریبیونل میں جناب نے کہا شفیع الرحمان صاحب کا ٹریبیونل ہے, اس میں بھی میں نے نوٹ کیا ہوا ہے جس میں قصوری صاحب نے کہا کہ یہ میرا نام لکھانے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ بھٹو صاحب خود ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ان کی بات سن کے کوئی دوسرے نے کر دیا ہو. یہ ان کا بیان ہے ٹریبیونل. اب وہ بٹ میں ابھی اگر کروں گا تو یہ سیکوینس آپ چلیں جیسے آپ کریں. وہ میں نے ویسے کلیئر کر دیا آپ کو کہ وہ وہاں جو ٹریبیونل میں بات کیا ہے. Now sir, we are coming to re-investigation. Now if your Lordship kindly look file number 21.
ضمنی نمبر 96 21 یہ بھی ہے 21 بھی ہے سر. 3 ہیں بہت بڑی بڑی, اور اس کا ایک تو اوریجنل تھی, پھر اس کی یہ کاپی تھا. پھر میں اس کو کہوں گا والیوم 21 نکالو. یہ ہے فائل 21. تھینک یو. اس کا بھی اب وہ پہلے اس کا 21 پیج, اس کا پیج ہے سر 1. ضمنی نمبر کیا بتایا ملک؟ ضمنی نمبر سر 96 ٹاپ پہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں ضلع لاہور لکھا ہے نا, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے رپورٹ ضمنی 96. والیوم 21 کا ہے بھائی. بڑی مشکل سے سر یہ ریکارڈ آئی ول سے کہ اٹس ناٹ پراپرلی بین ارینج, اور اس کا مارکنگ اور نمبرنگ بھی بڑی, کوئی فائل کدھر ہے کوئی کدھر ہے, بہت ٹائم لگا. نمبر یہ کیوں پڑے میں 22 ہے اردو میں. دوسرا مائک قریب بتاؤ, صرف کہتے ہیں بتاؤ کون سی فائل, کون سا پیج ہے منصا سر؟ پیج 1. یہ آپ کے پاس کون سی فائل ہے جناب؟ فائل نمبر 21. یہ اس کا پہلا پیج. یہ 4-5 پیج ہیں جو انڈیکس ہے, اس کے آگے جو فرسٹ پیج ہے نا بیٹا یہ دکھاؤ. بہتر کاپی کس چیز کی ہے؟ ضمنی کی. جی سر یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ٹھیک ہے کہ یہ ہوا یہ کہ یہ جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں, مائی لارڈ نوز اٹ ویل, یہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہیں. یہ ساری فائلیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں, مگر شاید جناب کی اسسٹنس کے لیے کسی نے اس کی کاپیاں کر کے بھیج دی. بٹ میں نے ویریفائی کیا, جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں نے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں بھی پڑھی ہے. اگر جناب حکم کریں گے تو میں وہ بھی ریفر کر دوں گا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں پورا تسلی ہے. فائل 21 کا پیج کیا 1 سر 1. آپ کے پہلے 3-4 پیج چھوڑ دینا سر, وہ انڈیکس ہے. یہ انڈیکس کے 3 پیجز ہیں, یہ چھوڑ دیں, اس میں ساری وہ ڈیٹیل ہے. اس میں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ ہمیں؟ سر میں پڑھنا چاہوں گا اس. پڑھیے. یہ دوبارہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کیسے؟ جی ہاں, ویری رائٹ. یہ ایز مائی لارڈ جسٹس مدر واز آسکنگ سر, this they are now talking, and madam this is how it started. I will now come to the or whether there was order or not, that is just something else. ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ who is competent to pass order for reinvestigation. سر پہلے ایک سے گل کر چلیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. I always love the questions and I am ready to answer every question, but the problem is, as of my Lord has said, نہیں آپ چلیں آپ اپنے طریقے سے چلیں. نہیں میں آپ کے طریقے سے چلوں گا. نہیں ہم بعد میں سوال پوچھیں گے. چلیں آپ چلیے. جناب میں اس کو پڑھتا ہوں. یہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھیے 24/7/1977, اور اس کے ٹاپ پہ لکھا ہے مرتبہ عبد الخالق DD مرتبہ کا مطلب ہے کہ who prepared it. Again it is a Persian word, مرتبہ. اب یہ لکھتے ہیں جناب علی رپورٹ ضمنی نمبر 95, یہ پچھلی کا حوالہ دے رہے ہیں. مورخہ 1/10/75 تحریر ہے حسب احکام مرکزی حکومت FSF کی کارروائیوں کے بارے میں انکوائری شروع ہے. یہ انکوائری ہائے مورخہ 13/7/1977 سے جاری ہے. FSF کا ریکارڈ ملاحظہ کیا جا رہا ہے اور متعلقہ اشخاص و ملازمین FIA سے خفیہ دریافت جاری ہے. اس دوران میں FSF کے خلاف عوام کی شکایت بھی زیر دریافت ہے. نواب محمد احمد خان کا قتل بھی خفیہ طور پر زیر دریافت تھا، اور لاہور ریلوے اسٹیشن لاہور پر مارچ 1975 میں جو بم کا واقعہ ہوا تھا اس کو بھی دیکھا گیا ہے، جس کی ایک سٹیج پر ٹریبیونل نے یہ ریمارک دیا تھا کہ تفتیش اچھے پیرائی میں نہ ہوئی ہے. ریلوے اسٹیشن والے کیس کی دریافت کے سلسلے میں یہ مخبری ہوئی کہ اغلب گمان ہے، غالب یس غالب کیا اس کو انگلش میں کیا کہیں گے، سمجھ گیا سر، اگمان ہے کہ نواب محمد احمد خان کا قتل بھی شاید FSF کی کارروائیوں کا نتیجہ ہے. اس شک کو مزید تقویت اس بنا پر پہنچی کہ جائے وقوع سے گولی بارود کے جو خول قبضہ میں لیے گئے تھے اس کا بور ایمونیشن FSF کے پاس زیر استعمال ہے. یہ غیر مصدقہ مخبری ہوئی کہ انسپیکٹر غلام حسین ASI اور افتخار FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت
ہائے وزارت داخلہ سے بات کی. لائن چھوڑ گیا جی. اور ان کے میں وہ جو ہے اس پریشر میں ہونا جی کہ مجھے جلدی کرنے. نہیں وہی امپورٹنٹ. اور ان کے دیگر ساتھی اس قتل کے ذمہ داری ہے. یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون کو دی گئی, جنہوں نے ڈائریکٹر جنرل صاحب FIA اسلام آباد اور افسران انچارج دریافت ہائے وزارت داخلہ سے بات کی, جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا. اب یہ امپورٹنٹ ہے, جنہوں نے باقاعدہ حکم دیا کہ مقدمہ ہاذا جو عدم پتہ ارسال ہو چکا ہے اس کی تفتیش FIA اپنے ہاتھ میں فوری طور پر لے. یہ حکم مجھ تک بوساطت جناب ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون پہنچا, جس پر میں نے مثل تھانہ اچھرا سے حاصل کی. This is very important. He claims that this file was taken by him from police station Ichra, obviously before writing of this Zimni. This he is writing on 24th of July 1977. حاصل کی, جس کی تحریری اطلاع نوٹ کی شکل میں DSP اچھرا کو کر دی. کل اس قسم کی اطلاع چٹھی DIG صاحب کو دی جائے گی. اب جناب یہ تو ہو گیا اس کا کلیم. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فائل اس پولیس اسٹیشن سے کیسے لی گئی. ایک اس پوائنٹ میں ملک صاحب ایک بات اس میں کہ یہ جو مخبر کی اطلاع تھی, کوئی ان رائٹنگ کوئی چیز ہے کہ مخبر کی اطلاع کو کہیں پہ ریکارڈ کیا ہو؟ نہیں وہ یہ پروٹیکٹڈ ہے ایویڈنس ایکٹ میں کہ آپ پولیس کو نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو جرم کی اطلاع کہاں سے ملی. انفارمیشن نہیں ہوتی, نہیں وہ ہو نہیں سکتی. صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مخبر نے بیان کیا اس بیان کو کہیں پہ رائٹنگ میں کسی ریکارڈ پر آیا کہ یہ ہوا ہے؟ یہی ہے جو میں نے پڑھی. مگر یہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہ اطلاع ڈائریکٹر صاحب FIA سینٹرل زون کو دی گئی. انہوں نے دی نا مخبری کی اطلاع. نہیں ابھی سوال نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹر جو تھے FIA کے, ان کا کوئی بیان ہے؟ وہ گواہ بھی نہیں نہ ان کا کوئی بیان. وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مخبر نے دی, مگر یہ تو پھر مخبر تو چھوڑیں, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر یہاں تو انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ بیان ڈائریکٹر FIA نے مجھے دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کم از کم ڈائریکٹر FIA سے تو پوچھ لو کہ بھائی یہ بات. میں I will respectfully submit, sir, this is not that important. This is not important. Okay. Important point is when they started the investigation. And then two other questions. Number one, when did they get a record from the police station of the investigation which was closed? And number next, who ordered for the reinvestigation? And there's a related question. Yes. How did it go from police to FIA? تو یہ اگلا کوشچن ہے جی. وہ تو اب میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کو ذرا پوائنٹ کو کلیئر کر دوں. اب جناب میں again I will refer to file number 6 of the police file. Page 108. 108 جی. اب یہ بھی میں اگر اجازت دیں تو پڑھوں گا. جی پلیز. جناب علی مل گیا سر؟ Yes. My Lord Justice Shah has got this. Everybody got it. No, fine. You're only concerned with Shah Sahab. میں اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا. گزارش ہے جب بھی آپ جواب دیں پھر ہمیں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. گزارش ہے کہ بحکم سینٹرل گورنمنٹ مقدمہ عنوان بالا کی تفتیش FIA لاہور کر رہی ہے اور مقدمہ داخل دفتر عدم پتہ ہو چکا ہے. وہ تفتیش کر رہے ہیں, مقدمہ داخل دفتر ہو چکا ہے. بذریعہ درخواست ہاذا
इस्तदा है कि मुकदमा हादा की रिपोर्ट अदम पता लफ कागजात बसिलसिला तफ्तीश मुकदमा महावत से हासिल करने का हुक्म सादर फरमाया जाए। ये मोहम्मद बूटा इंस्पेक्टर साहब हैं, 8/7/1977 को ये लिख रहे हैं, और अगर राइट साइड पे देखें वो वसूल कर रहे हैं 8/7/77। 8/8 सॉरी। इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत ये है कि इन्वेस्टिगेशन वो शुरू कर रहे हैं 24/7 से, डॉक्यूमेंट ले रहे हैं 8/8 को इन्वेस्टिगेशन। उसने लास्ट जिमनी 95 का जिक्र किया, 1/10/75। बिल्कुल, वेरी राइट। अब ये बात क्लियर हो गई कि जनाब इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और फाइल जो है वो बाद में ली गई, और उसमें कहा गया कि रिकॉर्ड हासिल किया जा चुका है। अगर आप उसको देखें ना, जो ज़िमनी पहली जो अब्दुल खालिक लिख रहा है, वो कहता है कि रिकॉर्ड थाना इचरा से हासिल किया गया, और हासिल कब हो रहा है, ये होगी। अब आ गया अगला क्वेश्चन कि ये री इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई। ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पुट बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मदर एंड इवन जस्टिस हलाली। There is no application on the record. I will repeat it. There is no application on the record to the magistrate for reopening the reinvestigation for his permission, or any application to the higher forum of the magistrate for setting aside the order. There is no application. So patently illegal. Number next, sir. Certainly, if there was some order for reinvestigation, obviously it would be under some provision of law, under section so and so, such and such act. This investigation is transferred from the police and entrusted to the FIA. But sir, if your lordship have a look at the FIA Act, I think it was passed in 1975, if I'm not wrong, 1970. There is no provision. There is no provision in that act that any investigation from any agency can be transferred and entrusted to the FIA. There is no provision. And there is nothing on the record what provision of law was invoked for this particular purpose. Don't you think they were investigating the officials of FSF, which led to this? No, so, but as far as the investigation of those officials in FSF, that was competent. But you say that after that they could not have. If your lordship kindly read the first Zimni, they say that when we were investigating the affairs of FSF, we came to know that they might be involved in this case, and we informed our officer, and they transferred this investigation. So under what law they transferred? Besides the point whether they went to the magistrate or not, this is the most important point, why they did not go to the magistrate, but we ignored it for the time being. Even if we ignore this fact that the magistrate approved the police report and closed the case, but they wanted to reinvestigate, okay, they can, suppose they can. Who was competent to order for reinvestigation? And if competent, under what provision of law? This is my point. What provision of law order will be passed? As your lordship knows it very well, under the NAB ordinance there is a provision for transfer of investigation from local police to the NAB authorities, but there is no provision. ठीक है, अब समझ गए. Next point. जनाब ठीक है सर, आगे तो चले. मैं अब मैं इस पे वो PW 41 को रेफर करना चाहता हूँ, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ रहा सर, उसका थोड़ा सा बयान पढ़ रहा हूँ, जिसमें उसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहा है, दैट विल बी द आंसर टू द क्वेरी ऑफ माय लॉर्ड जस्टिस सियाया, कि जी उसने क्या कहा. ये वॉल्यूम है 4. अब देखिए ना, डॉक्यूमेंट कोई एक वॉल्यूम में, कोई दूसरे वॉल्यूम में पढ़ते नहीं, आपने माशाल्लाह बड़ा मेहनत की है. बताऊं, मैंने नहीं किया सर. क्रेडिट गोज टू दीज टू जेंटलमैन who are standing behind me. This all has been done, 90% credit to these two gentlemen. I have not done anything. Volume 4, page
पेशर 690 AW41. Even sir, I'm addressing my lord, yes sir, yeah, even the order for investigation in the affair of FSF was verbal. जी 4 आ गई हाथ में, आप बताइए। जी सर, पेज 690 ये टाइप पेज है। ये टाइप पेज, ये तो एविडेंस का पेज है ना जी। अच्छा, ये एविडेंस का पेज 690 जनाब। यहाँ से ये क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है ना जी। मिल गया है? नहीं मिली? मिल गया सर, बाकियों का भी मिल जाए तो अगर इजाजत दें तो। जी मिल गया, चलिए सर। वो नहीं, वो मुझसे ज्यादा जवान है, वो इनको जल्दी मिल जाएगा। जी फरमाइए। जी सर। जी सर, ये क्रॉस एग्जामिनेशन है और इसमें ये पॉइंट नोट कर लें कि ये जो वकील साहब हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, इरशाद अहमद कुरैशी साहब हैं। ये भुट्टो साहब के वकील नहीं हैं, ये उनके वकील हैं जिन्होंने कन्फेशन किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिन 3 मुल्ज़मान ने no, those who have been hanged, They were co-accused, they were hanged. All 3 persons whose names are mentioned, kindly see. co-accused lawyer. Cross examination by Mr. Irshad Ahmed Qureshi, advocate. Falsufi Ghulam Mustafa confessed, hang. Iftikhar confessed, hang. Arshad Iqbal confessed, hang. He is their counsel. Now kindly see the reply. The direction to conduct the inquiries into the performance of FSF and its officer were conveyed to me by my director verbally. Sir, this is the position. Even that was not under some order, written order. Was it a retracted confession? No, they remain stick to their confession. So then why is he cross-examining? But they were accused, but they said that we did confess their crime, but said we were compelled, we were under the circumstances. This confession was 164 confession. 164 ने पूरी तरह रिट्रैक्ट नहीं किया ना जी, कन्फेशन के साथ उसको जस्टिफाई करने। अब मैं अगर इस पे आ जाऊंगा, मेरा I am ready for you even for a month. No, I just want to know that when you use the word confession, it was a 164 statement? It was 164 statement, and even in that 164 statements, did he name Mr. Bhutto or not? No, they had nothing to do with Bhutto. They said we did under the direction of Mia Abbas and Ghulam Mustafa. So they did not mention. वो तो इस confession में उनका जिक्र ही कोई नहीं है ना जी, वो relevant भी नहीं है उनके लिए। So confessed their crime. No, I want to write it. Committed on the instructions. On the direction of Sufi, this Mia Muhammad Abbas and Ghulam Hussain. Mia Abbas. Who was he? He was Deputy Director FIA. Deputy Director FSF. And the other gentleman? Other gentleman was Ghulam Hussain. He too was from FSF. Probably he was Inspector FSF, and he became approver. He is the second approver. So अब इसकी चेन में थोड़ा सा अगर इजाजत दें तो क्लियर करूं केस क्या है प्रोसिक्यूशन का, ताकि ये थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हो जाए। री इन्वेस्टिगेशन की हद तक तो क्लियर है कि ये वर्बल थी। नहीं सर, वो आगे एक और अगर एक और पढ़ लेना जी, एक और पेज तो और क्लियर होगी, वो भी पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसिक्यूशन का केस 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक है, उसी पे ये पेज 693 पे जनाब अगर देख लें, 693 692 पे भी देखिएगा, उन्होंने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे री इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये पेज 692 पे हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, but where is the order? Where is the order? Such order is available. सही है, अपना जो नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो खुद कहा। अब 693 पे आ गए, बताइए 3 में क्या है? ये जनाब के क्रॉस एग्जामिनेशन, ये फिर ये मियाँ अब्बास के वकील हैं कुर्बान सादिक इकराम साहब, हमारे जज भी रहे हैं, हाई कोर्ट के फौत हो गए हैं। अब ये जनाब जरा पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। I did not come across any written order entrusting the investigation of this case to the FIA. अब ये उनका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सर कह रहे हैं कि I did not come across, but
Such an order must be in the office of the Director FIA Lahore. The general inquiries into the performance of FSF and its officer were started by the FIA on or about 13/7/1977. No written order in this respect was given to me. I don't know the original authority from which the order to conduct the inquiry initially emanated, but I was ordered by my Director General verbally. ये है, अब इसको आप बायस कहेंगे, डिसऑनेस्टी कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है. अब मैं आगे जाऊंगा ना तो फिर आप देखेंगे कि क्या हुआ. तो ये है. अब ये चीज़, माय लॉर्ड, आई एम क्लियर नाउ. Now I am coming to a summary of the prosecution case, as my lord put. Sir, the prosecution case, in 2 minutes I will sum up this, is that there was a खत्म कर दें. एक सिर्फ बात है. In the meanwhile, any private complaint was also filed. Yes, sir. Well, I will deal that. I will deal that. अच्छा, you will come there. बड़ा लंबा है ना सर, ये बड़ा. अच्छा, ठीक. बड़ी इसमें तलद्दुद करनी पड़ी. आपने नोट किया कि एक पेज जो एक फाइल में है, दूसरा दूसरी में है, तीसरा चौथी में है, उनको इकट्ठा करना, फिर बड़ा समराइज कीजिए. 15 साल के बाद मुझे ये काम करना पड़ा. अब जनाब मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये समराइज मैं ये करता हूँ. We have to keep you entertained in your retirement, मंजूर मलिक साहब. I feel, sir, this is honor for me and this is my duty. I don't think anyone else could have done this job. बड़े लायक आदमी माशाल्लाह सजाद हसन साहब बैठे हैं, अजहर वानी साहब बैठे हैं. मैं तो इसको ये ड्यूटी समझता हूँ सर. मैं अब एक बात करने लगा हूँ कि हमने प्रैक्टिस में जब भी ये केस साइट किया, इवन द मैजिस्ट्रेट साइड छोड़ो जी, magistrate did not like to even read this order. And I still remember, sir, I was counsel in hijacking case at Karachi. I was counsel for one of the accused. And Batalvi Saab was very eminent lawyer. अब वो भी डिफेंस साइड पे थे, तो प्रोसिक्यूशन ने जब भी उन्हें एम्बैरस करना होता था, कोई बहस शुरू होती थी, तो वो ये जजमेंट दिखा लेते. एंड आई रिमेंबर द सिचुएशन 25 years बैक. तो ये आपकी ड्यूटी है. मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको बातें बता दूंगा, उसको किस तरह डील करना है, इस इम्प्रेशन को कैसे ख़त्म करना है कि ये आगे आप जाएंगे तो इट विल बी मोर शॉकिंग. तो अब प्रोसिक्यूशन केस ये है कि देयर वाज ए कंस्पिरेसी sometimes before 74 between late Zulfikar Ali Bhutto and probably, if I'm not mistaken, Haq Nawaz Twana, who was Director General FSF, and Mia Muhammad Abbas, who was Deputy Director FSF, for assassination of. The conspiracy section was incorporated in the charge or no? है चार्ज में तो है, सदा में भी है, चार्ज में भी, FIA में नहीं, FIR में नहीं. अब मैं सर इसको खत्म कर लूँ अगर इजाजत दे तो जी. अब वो ये था कि जी there was a conspiracy between late Zulfikar, उसका टाइम नहीं दिया गया, but obviously that was after the creation of FSF and before Masood Mahmood became the Director General of FSF. Haq Nawaz Twana, Zulfikar Ali Bhutto and Mia Muhammad Abbas. There were three. Conspiracy was to assassinate Ahmad Raza Kasuri Saab, who with grace of Allah is still alive. May Allah give him long life. And Haq Nawaz Twana retired and Masood Mahmood was appointed as Director General FSF. That I will deal separately. And then he was introduced in this conspiracy. Masood Mahmood was introduced in this conspiracy. Then Masood Mahmood, late Zulfikar Ali Bhutto and Mia Abbas. Mia Abbas ordered this Ghulam Hussain to execute this conspiracy. The task was assigned to Mia Ghulam Hussain. Ghulam Hussain arranged Sufi Ghulam Mustafa, from whom they received Sten gun and other weapon, etc. And he also arranged Arshad Iqbal and Iftikhar. These two persons, along with Ghulam Hussain,
They were present at the spot. This is prosecution story. And Ghulam Hussain was watching the whole operation. He was controlling the whole operation. And these two young men in their early 20s, they fired at the car. One is Sufi Ghulam Mustafa, the other is? Sufi Ghulam Mustafa is the person who was not present at the spot. His fault was that he provided the ammunition, weapon to these three persons. Ghulam Hussain, Iftikhar, तीसरा क्या है? Arshad. Iftikhar एक हो गया, दूसरा दूसरा अरशद है, तीसरा गुलाम हुसैन. अब हुआ ये, अगर आप जनाब रिकॉल करें तो मैंने बताया कि जब फर्स्ट इंटरिम चालान सबमिट किया गया तो इसमें सारे ही मुल्ज़म थे. वो जो थे मसूद महमूद साहब वो भी मुल्ज़म थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो भी मुल्ज़म थे, और वो दूसरे ये 7 बंदे सारे ही मुल्ज़म थे. फिर Masood Mahmood became approver. His statement, first his confessional statement was recorded, where he confessed this, that I was part of this conspiracy. Whether or not this is a separate question, I will deal it later on. Thereafter, his statement was recorded when pardon was granted to him under Section 337 Code of Criminal Procedure, and he became approver. He was number 1. And then Ghulam Hussain became the approver, who was head of this operation. So these two persons became approver. They were granted pardon. Then they appeared before the court as witnesses. Those remaining 3, they remained stick to their confession. Pardon was granted by the provincial government or the federal government? No, sir, it is always granted by the magistrate. At that time, it was deputy commissioner or anybody authorized by the district magistrate. But at the relevant time, he was additional deputy commissioner. He granted. Sir, so your lordship is asking some question? No question. जिस तरह मसूद महमूद का 164 का भी था और अप्रूवर भी था, इसी तरह गुलाम हुसैन का भी 164 का था. बिल्कुल था. उसका भी था. पहले तो वो मुल्ज़म बने हैं ना, इसीलिए तो वो मुल्ज़म बने. पहले इंटरिम चालान में वो मुल्ज़म इसीलिए बने ना कि उन्होंने, अब फिर बाद में वो अप्रूवर बन गए, स्टेटस चेंज हो गया. अब ये था प्रोसिक्यूशन केस. इसमें जो अबेटमेंट के कंस्पिरेसी के मुल्ज़म थे उनको भी सजाए मौत, और जो अक्रंस के थे उनको भी सजाए मौत. 5 persons were hanged for 1 injury. 5 persons. जिस शख्स को जिसको कत्ल किया गया, इंटेंशन उसको कत्ल करने का नहीं था. सर ये तो ला है ना कि अगर इंटेंशन ए को करने का है और बी हो गया तो वो वही समझा जाएगा कि ए ही हुआ है. वो बहुत क्लियर है, वो 301 क्लियर. चले सर आगे चले जी. Whenever you are tired, let us know. We can take a break. No, I am not. I'm not. I will just ask for a break for the prayer. Whenever you want, we'll break. No, sir. Prayer? 2 बजे. हाँ 2 बजे. 2 बजे करते हैं. Sir, Chalan, this now I'm talking of incomplete Chalan, as your lordship has said. I will show you the incomplete Chalan. It was prepared on before that, no transfer. And if your lordship permit me, may I deal with the transfer of this case? No, I think Chalan ke baad hi hua. Incomplete Chalan was prepared on 11th of September 1977. 11th of September, this reinvestigation started in July, and on 11th of September, incomplete Chalan was prepared. And sir, it was submitted in the court of the learned magistrate on 12th of September 1977. Interim Chalan is at page 282 of volume 7. Volume 7 जनाब देखें. Page sir 282. देखना में ठीक है सर. वो आप देख लें कि ये इसमें 7 एक्यूज है ना. देखिए 7 मुल्ज़म है, बाद में कंप्लीट आया तो 5 रह गए. हाँ वो अगली बात है, बस ये सबमिट हो गया सर.
اب یہ سمٹ ہو رہا ہے 12th of September 1977 and now the order is at page 3 to 4 of the same volume. یہ ضروری ہے جی, یہ ذرا پڑھ لیں. یہ ضرور سر, یہ بڑا ضروری ہے. کون سا پیج؟ سر پیج 3 to 4 volume 7. جی جی پڑھیے. یہ سر سرکار بنام, یہ اردو میں ہے جی, بنام ذوالفقار علی بھٹو وغیرہ ودن بریکٹ لکھا ہے 7 کس, یہ 7 لوگوں کے خلاف چلا. زیر دفعہ 302, 307, 120B, 109 تے پہ تعزیرات پاکستان. نامکمل چلان مقدمہ ہاذا آج عدالت پیش ہوا. ملزمان جوڈیشل حوالات میں ہیں. چلان بعد پڑتال درج رجسٹر ہو کر بعدالت جناب سیشن جج لاہور بھجوایا جاتا ہے برائے مزید کاروائی, کیونکہ جرم زیر دفعہ تے پہ کی سماعت کی مجاز صرف عدالت سیشن ہے. نو سر, دس از آنسر آف یور کوئری, سو دے آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو ایگزامن اینی تھنگ, دے ول سینڈ ٹو دی کورٹ آف سیشن. اس میں کیا خاص بات ہے؟ خاص میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ 12 تاریخ کو اس نے بھیج دیا سیشن کورٹ کو. پھر سر میں آگے چلتا ہوں. اچھا 190 اور ریسیو بھی ہو گیا سیشن, ریسیو بھی سیم ڈیٹ پہ ہوگا. اسی ڈیٹ کو یہ سیشن کورٹ کو ریسیو ہوگا, اسی پیج پہ, اسی پیج. ٹھیک ہے سر, کچھ نہیں اگر اجازت دے. میں ذرا آپ کو تھوڑا سا پش بھی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک جی, بڑا ضروری ہے. 12 تاریخ کو یہ چالان سیشن کورٹ چلا گیا. اب دس از دا فرسٹ آرڈر آف دا لرنڈ سیشن جج which I have not seen anywhere else. Received today. PP to check and report by 14th of instant. اب پی پی سے پبلک پروسیکیوٹر یہ وہ جج صاحب تھے, then he was judge of this honorable court as well. He was at that time and he is alive now. کون سیشن جج؟ یہ سیشن جج کون؟ اعجاز نثار صاحب ہمارے. اچھا, اعجاز نثار صاحب سیشن جج لاہور تھے, آج بھی ماشاءاللہ زندہ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے. یہ ان کا آرڈر ہے. اب اسی دن, اب اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ان نے کوئی آرڈر کیا, اس نے سیشن جج صاحب وہ موقع ہی نہیں ملا. وہ کیا انہوں نے تو ایک آرڈر کیا نا جی, انہوں نے پی پی کو بھیج دیا. انہوں نے پی پی سے کہا کہ آپ رپورٹ کریں ایگزامن کر کے. اٹس ناٹ ریکوائرمنٹ آف لا. So PP has nothing to do with that. That is so he did not exercise his judicial mind on the nothing. And PP submitted report of what's happened next. That is more important. PP سے صرف اسسٹنس مانگ رہے تھے. وہ بہرحال ان کو سمجھا کے چلیں, کچھ بتا دیں کیا, بٹ مجھے نہیں پتا, میں کمنٹ نہیں فردر کرتا اس پہ. اب اسی دن, اب یہ یہاں امپورٹنٹ بات آ رہی ہے, اسی دن 12 تاریخ ہے اور نیکسٹ ڈے پہ یہ کیس ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے. یہ دکھائیں, یہ ریکارڈ سے دکھائیں. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. اب میں جناب, your lordship is highly respectable for me, but I am also... I think you are breaking all the ratings of all the TV channels today. کیوں سر؟ Sensational. Suspense. وہ بات ہی You created suspense. نہیں, it's not suspense sir. جی, Your lordship, we are waiting for the next thing you say. جی, volume 7 page 1 sir. Volume 7 page 1. Same volume. Same volume. And I will write to read the caption of this application, the title we call, The State versus Mr. Z.A. Bhutto, etc. So it's very important. Yesterday some lawyer told that perhaps the application was filed by Kasuri Saab. This application has been filed by the state, etc. Order hai 13/9/1977. In my whole career, sir, as a lawyer, as a judge, I have not seen such a brief order. Which order is it? This one. This just few lines order. ذرا پڑھ لیں اس کو. میں پڑھتا ہوں. اب دیکھیے, مسٹر انور, میسرز انور, ایم اے رحمان, اعجاز حسین بٹالوی and Farouk Bedar, advocate, all for the prosecution. In view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial.
In view of the submissions, what are those submissions? Nobody knows. Where is the petition? No, it is not on the record. Any notice to the other side? No, no. یہ تو کہ یہ ہوا کیا ہے؟ یہ بڑی پینفل سچویشن. آپ اتنا مرغن غذا نہ کھلائیں کیا مزم نہ کریں؟ نہیں آپ کریں گے. میں کہتا ہوں یہ تو سر بڑی باتیں ہیں نا جی. ابھی تو اور باتیں اتنی زیادہ آئیں گی کہ بہت مشکل ہو جائے. اسی موقع پہ ذرا وہ پروویژن بھی بتا دیجئے. 26 کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں سر. وہ بعد میں پڑھیں گے. پہلے میں ایک اور بات بتا دوں, وہ میں نے پڑھنی ہے, اس کے ساتھ تو بہت بڑی بحث ہے اس ایشو پہ. ملک صاحب اس کے اوپر جو نمبر لکھا ہے 127T ٹرانسفر ایپلیکیشن. یہ ٹرانسفر سر ٹی فار ایپلیکیشن نہیں ہے. نہیں ایپلیکیشن ہے نا جی. ایپلیکیشن ریکارڈ پہ نہیں ہے. ریکارڈ پہ نہیں ہے. ہوگی. ذرا اس میں اس پیج پہ صفحہ نمبر 2 پہ 2 نمبر ہیں. ایک ایک کرمنل اوریجنل 60-77. سر وہ یہ نہیں ہے. وہ اب آرڈر آ گئے ہیں ٹرائل کورٹ کے, جو ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بن گئی ہے نا, یہ آرڈر اس کے ہیں. یہ ٹرانسفر اپلیکیشن سے صرف یہی ریلیٹ کرتا ہے, وہ اس کے نہیں ہے. یہ بیسیکلی جو سٹاف آفس ہے نا آپ کا, اس نے ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کون ہے؟ مولوی مشتاق حسین صاحب. سر یہ اگلا ہے, اس کو کنفیوز نہ کریں اس کے ساتھ. یہ اگلی بات ہے. اس ٹرانسفر اپلیکیشن پہ یہی آرڈر ہے. نہیں, ٹرانسفر اپلیکیشن کو نمبر تو لگا ہوا ہے 127T. کو لگا ہے نا جی, اسی کا آرڈر ہے نا. وہ کاپی کہیں نہیں ہے. وہ کاپی ہے ہی نہیں. اور اگلی بات میں بتاتا ہوں نا جی. ایک تو یہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ the state has made Zulfikar Ali Bhutto and other as respondent. They were respondent, but no notice. No notice. And the more interesting point is that this application could not be filed before 12th when the challan was submitted. Before that it could not be filed. Malik Sahab, this order was challenged before any higher forum? Madam, I have not been able to get hold of any petition before the Supreme Court, but it is for Naik Sahab whether there was a challenge or not. I think it was not. But then there was a petition filed by late Zulfikar Ali Bhutto before the High Court wherein this issue was raised, and that order is very interesting which has been passed. But these are, whatever I am saying is undisputed. Undisputed that this is the order, no ground, no contention, and no conclusion, and no notice. No notice. In spite of the fact that they were respondent, and the state was conscious. State was conscious. Prosecution was conscious that they people are relevant. So this they was were the responsibility of the court. Yes, of course. Of course it is a responsibility of the court. And when just I was submitting, sir, that before 12th this application could not be filed because under section 526 only a case pending before the court can be transferred. یہ پاسبل ہے 13 کوئی فائل ہوئی ہو جب یہ بھی بالکل مجھے نہیں, آئی ایم سوری, میں نے تو ذرا سیف سائڈ پہ رہا ہوں. تو یہ کہاں پہ پینڈنگ تھا جو یہاں پہ ٹرانسفر ہو گیا؟ یہ میجسٹریٹ کے پاس پینڈنگ تھا نا جی. میجسٹریٹ سے چلا گیا سیشن جج کے پاس. اسی دن 12 کو چالان سبمٹ ہوا. 12 کو میجسٹریٹ نے 190 سب سیکشن 2 اس کے تحت اس نے سیشن جج کو بھیجا, اور سیشن جج نے اس پہ ایک آرڈر کیا, اپنے پی پی سے کہا کہ رپورٹ دو. ابھی وہ رپورٹ آئی یا نہیں آئی, وہ رپورٹ ویسے پڑی ہے فائل پہ, مگر وہ پٹیشن ہوگی ہائی کورٹ کو. مائی لارڈ ہیز ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ دس مائٹ ہیو بین فائلڈ آن 13th, بٹ ایٹ دا موسٹ if we give allowance to the prosecution, it could not be filed before 12th of September, because before 12th of September nothing was pending in any court. And when I will read 526, that too is very relevant, you can transfer a case from a court. You cannot transfer investigation to the court. So no notice. آپ کہتے ہیں کہ سیشن جج نے کاگنیزنس ابھی تک نہیں لیا, کیس ان کے پاس نہیں تھا. نہیں, ان کے پاس تو تھا, چلا گیا نا جی. کاگنیزنس کی کنڈیشن نہیں ہے, وہ مقصد یہ فرام اے کورٹ obviously. اور آگے وہ بھی ملک صاحب یہ جو ہے کہ it shall be heard by the full bench.
اب یہ تو جناب آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ سیوموٹو ٹرانسفر ہے. No, sir, please. This is not suo motu. There was a petition. Trial will be conducted. But when there is no petition on the record, but sir, then we can only assume it's suo motu. No, because number is there. So, by all fairness, since I am here to assist this court, I will not say. Who is the petitioner? Petitioner is a state, sir, prosecution. See, why would you assume it's the petitioner? Why not the complainant? Why not the accused? Why not anybody else? Sir, upar pade na. The state versus so and so. Yeah, padha na iska title. But it may be because every criminal case is the state versus. Yes. So I don't know. They don't even mention who the petitioner is. No, sir, no. The state is a petitioner because in every criminal case it is the state, because state is responsible for your life, liberty, property, etc., etc. State is the custodian. So as in England, the prosecutor is the crown. Yeah, I'm just taking a charitable view of the matter. If it was suo motu, maybe the court could have done, I don't know. But if it was a state, then notice was absolutely essential to the accused and the complainant. Sir, maybe the complainant didn't want to transfer. मैं आऊँगा कि उसका जवाब जो दिया है ना हाई कोर्ट ने, अब मैं इतने पेन में आ गया उसको पढ़ के कि जब उन्होंने कहा कि हमें नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है. अच्छा, they admit it. Yes. वो मैं any application is available on record? Oh, sir, no application. पता नहीं अब बाकी लोगों की क्या राय है. नहीं, अगर आप ये बात अभी भी कर दें, ये जो आपने कहा जो हाई कोर्ट में जो. सर मैं करूँगा मगर मुझे चलने दें, मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे बड़ी सालों के बाद. We appreciate that. मैं चाहता हूँ कि मैं आगे उस वक्त चलूँ जब आप तमाम लोग जो हैं वो क्लैरिटी में आ जाएं कि जो मैं कह रहा हूँ मैं कह सका हूँ और मैं समझा भी सका हूँ. अब मैं क्योंकि डिफरेंट है ना जी, मैं जल्दी नहीं समझता, जनाब बहुत क्विक हैं, आप जल्दी समझते हैं, मेरा प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ वाले भी होंगे. अच्छा, थोड़ा सा आपको ये अंदाजा होगा मलिक साहब, थोड़ा सा अंदाजा जब आप यहाँ थे और वहाँ वकील की क्या हालत होती होगी. अच्छा, आपका अंदाजा? नहीं, कोई वैसी बात नहीं, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल सर, वेरी कंफर्टेबल, कोई ऐसा मसला नहीं है. मैं तो हूँ, आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस, आई विल वेलकम योर क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन. चार्ज का नहीं. No, I think सर ये चार्ज तो अगली स्टेज आनी है ना, अभी तो चार्ज कहाँ से आ गया, अभी तो केस आया है. जो आपने ट्रांसफर के बाद जो डेट पड़ी है हाई कोर्ट की, उन्होंने डायरेक्ट एविडेंस के लिए रखा है. सर वो मैं आऊंगा ना जी, उस पे मैं आऊंगा. चलें, let us not. नहीं करें सर, कोई बात. अच्छा, अब ये मैं सबमिशन ये करूंगा कि इससे पहले कि मैं इस पे अपनी सबमिशंस करूं इस पॉइंट पे कि क्या हुआ, ट्रांसफर एप्लीकेशन कैसे होती है, क्या नहीं हो सकता. वो भुट्टो साहब की जो एप्लीकेशन कौन से पेज पे है, ये फर्स्ट कोई रेफर कर लेना बेटा, वॉल्यूम 10 है सर, वॉल्यूम 10. ये मौलवी मुश्ताक साहब क्या सेशन जज से एलिवेट हुए थे या लॉयर से? नहीं सर, lawyer थे and he was elevated in 1960. He was acting. Who was the chief justice? सर वो मार्शल लॉ के बाद एक्टिंग का उन्होंने ओथ लिया पहले, फिर उन्होंने परमानेंट का भी लिया. वो भी मैं अगर इजाजत. कौन सी वॉल्यूम? ये अभी मैं रेफर कर रहा हूँ वॉल्यूम 10 को. वॉल्यूम 10 सर. वॉल्यूम किशमिश पेज कौन सा? ये पिटीशन है नहीं, पेज कौन सा है? अच्छा, पेज 19 पिटीशन का. अच्छा, पेज 19 सर, वॉल्यूम 10 सर, 19 सर. अब क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं, आपने कहा कि यही बता दें, उन्होंने क्या इसका ऑर्डर लिखा है, मैं इसलिए इसको सर पेज 19 वॉल्यूम 10. यस, मिल गया सर? मिल गया, मिल रहा है जी. बाकी सब सर्विस पूरी तरह नहीं है सब जगह. On behalf of जी सर, ये एप्लीकेशन है क्रिमिनल ओरिजिनल के ऊपर है, नंबर मिसलेनियस नंबर, ये क्रिमिनल मिसलेनियस है 933 M of 1977. सर दिस वाज फाइल्ड ऑन 5/10/77. So important is this was before framing of the charge. This was before framing of the charge.
So this is in re the state versus the complainant, Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused. It is on behalf of Mr. Zulfikar Ali Bhutto accused in the above mentioned case. It is respectfully submitted. ये पहला पैरा मैं छोड़ देता हूँ. This is political. मैं जनाब को अगले पेज पे ले जाता हूँ. ये पेज 2 पे सर, जिसपे वो बायस की बात उन्होंने की है. पढ़ूं सर? पेज 2 ग्राउंड 3. पेज 2 इस पिटीशन का. जी पढ़िए. Page 2 ground 3. The apprehension of the petitioner about the partiality and prejudice of Mr. Justice Mushtaq Hussain is further enhanced by his order transferring the above caption case from the lower court to the high court on the day the petitioner was enlarged on bail. Mr. Justice K.M. Samdani, before a complete challan was even submitted to the subordinate court concerned. ये उन्होंने ये ग्राउंड ली है. अब ये एक्टिंग चीफ अगला है 4 that against the order passed Mr. Justice Mushtaq Hussain as acting chief justice constituting a special bench of 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint. अब वो जिक्र आ गया जनाब का. My Lord Justice Tariq Masood was asking. 5 judges presided over by him for the trial of the challan case when the private complaint with regard to the same matter was being inquired into by a division bench of the High Court caused grave apprehension about getting a fair trial. It is submitted that on that date even complete challan has not been filed, but yet 24 September was fixed for hearing of the case. That the withdrawal of the challan case from the lower court without hearing the petitioner, now he is agitating, without hearing the petitioner has caused prejudice to him and deprived him of his right of appeal revision to the High Court. तो से ये इतराज़ जो पूछ रहे थे जनाब पिछली डेटों पे, ये इतराज़ हुआ और इसका ऑर्डर भी हुआ. अब वो ऑर्डर देख लेते हैं. मिला है तो नहीं मिल रहा. कहाँ से हैं? पार्ट कौन सा है? पार्ट 9 है. अच्छा सर, ये आपका अब पार्ट 9 है वॉल्यूम की बजाय. किसी जगह पे ये पार्ट है, किसी जगह पे वॉल्यूम है जी. ये मिल गया है, सबको जी मिल गया जी. सर पेज इसका 35 है, यहाँ से ये ऑर्डर शुरू हो रहा है जी. ये इसका ऑर्डर तो बड़ा लंबा है, मैं इसको स्किप करूंगा. 55 पे कौन सा है? 40. अच्छा जनाब, इससे पहले जरा मैं पैरा पढ़ दूं. पैरा 14 जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम सब ने पीसीओ का ओथ उठाया है, सुप्रीम कोर्ट से पीसीओ का ओथ उठाया है. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसी ऑर्डर का, हाँ इसी ऑर्डर में लिखा है एट पेज 43 सर. पेज 43 पैरा 14 वॉल्यूम. बिफोर यू कम टू इट, ये अगर आप टाइटल देखिए पेज 35 पे, इसमें 2 एप्लीकेशंस का 2 हैं. दूसरी भी है. दूसरी कौन सी है? 933 तो वो वाली है. 933 में उन्होंने वो तो रिक्यूजल वाली है. हाँ वो कोई. और दूसरी वाली कौन सी है? ये एक तो ये है ना जिसमें उन्होंने इनका प्रेजुडिस और बायस. ठीक है, दूसरी कौन? दूसरी में क्या आपको इशू था? हाँ वो था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट को वो नहीं कंट्रोल कर सकता. दिस शुड बी परमानेंट चीफ जस्टिस. मगर वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं. ये इस रेफरेंस से ये ट्रांसफर के, मैं इसलिए उसको स्किप कर रहा हूँ. मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैरा है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ. जी पढ़िए. पेज बताइए. जी पेज 43 सर. पार्ट मिलॉट पार्ट 9. वो एक से जरा आ रहा है. बड़ा स्कैटर्ड हुआ है सर. कोई उधर ऑर्डर है, कोई जब तक पढ़ते हैं वो बाकी जनाब नहीं, वो आप पढ़ेंगे तो हम सुन लेंगे. ना भी आए ये सबके पास है. जी जी प्लीज स्टार्ट. सबके पास नहीं पढ़ते तो हम सुनते रहते हैं ना जब तक आ जाएगी. आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर. आप सही पढ़ेंगे. आई विल ओबे एवरी कमांड. नहीं जी प्लीज सर. The next challenge is to the oath subscribed to by the acting Chief Justice at the time of assumption of his office.
The only objection is that the acting Chief Justice did not subscribe to the oath as required under Article 194 of the Constitution. This objection cannot be sustained in view of the High Court Judge's Oath of Office Order 1977 within bracket President's Order Post Proclamation number so and so. The oath of office prescribed therein is administered to the acting Chief Justice under Clause 5 of the High Court Appointment of Acting Chief Justice Order 77. A similar oath is required to be administered to all the judges of the Supreme Court by virtue of Supreme Court Oath Order 77 enforced on the 22nd of September 77. All the judges of Supreme Court, including His Lordship Chief Justice, have already subscribed to such an oath. The argument of learned counsel, if allowed to prevail, will be chaotic for the administration of justice in the country, since it will lead to the result that there is no superior court in Pakistan. It's a very good explanation for taking oath under PCO. But there was no. But probably the judges realized that there was no superior court in Pakistan. नहीं वो पता नहीं अब क्या कहते हैं, मुझे तो उनका यही समझ आया कि वो कहते हैं कि हमने ओथ ना लिया तो जज ही कोई नहीं, कोर्ट ही कोई ना। बड़ी बात है वैसे। बहरहाल एनीवेज, अब दूसरा दिखाओ, दूसरा पेज 55। मगर मेरिट्स पे बताएं। मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया, आपने कहा था कि वो दूसरी एप्लीकेशन क्या है। इट्स अ गुड हिस्ट्री लेसन, बहुत अच्छा, इफ नथिंग एल्स। मलिक साहब ये बताएं कि ये हाई कोर्ट ने कौन सी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज की, और किस केस में? इसी में ट्रांसफर में सर 526 अभी तो मैं पढ़ना है उसको अभी, क्योंकि मैं वो आई एम ओबेइंग द डायरेक्शन, वो मैं उसको पढ़ूंगा। साथ ही फिर ये भी बता दें बाद में क्वेश्चन करने से, स्टेट मस्ट बी थ्रू समबडी। स्टेट का मतलब सर यही होता है कि जैसे हम बेल पिटीशन फाइल करते हैं ना, हम अपील फाइल करते हैं, somebody is convicted, so that is ABC versus state। तो नहीं वो नहीं, वो लिखें ना लिखें, इतना है बात जगहों पे शायद है ऐसा, बट वो स्टेट का मतलब ही यही है कि वो प्रोसिक्यूशन है, वो कोई इतना सीरियस बात नहीं। अब मैं 35 दो, अब आप मेरिट वाली बात बताएं, वो मेरिट वाली बात कैसे डील कर रहे हैं? चलना मेरिट पे, अब इसमें सर प्राइवेट कंप्लेंट का भी जिक्र आ जाएगा, नोटिस क्यों नहीं हुआ वो भी आ जाएगा, ताकि दोनों चीजें जो आपने पूछी हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सर पेज 55 सर, पार्ट 9 के 31 ये पार्ट है जी 9 जी, 55 पेज पे जी, 55 पेज पे पैरा सर इसका है 31 जी। एक कंप्लेंट टिश्यू देना, एक कंप्लेंट अगेंस्ट 55 against Mr. Z. Bhutto and 19 other accused person under section 120B 119। नहीं, skip this। हाँ जी सर, ये बड़ा जरूरी है सर, ये थोड़ा प्लीज इसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने तो पढ़ लिया जी, कुछ खास बात है तो बताएं सर, अगर इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं, तो फिर बता दूं तो ज्यादा सुन ले सर, कुछ नहीं होता सर, बड़ा जरूरी है। आई एम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन ऑफ ट्राइंग टू get things completed also, ये बस नहीं हो जाएगा सर। देखिए वो उससे बेहतर है कि वो, अगर मैं ड्यू रिस्पेक्ट में कहूँगा कि अगर जल्दी में कुछ चीज़ रह गई तो फिर वो सारी जिंदगी का मसला है। जैसे तो आप इसको सुन लें, मैं तैयार हूँ, आप रात 12 बजे तक मुझे रखें, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं 12 बजे तक भी बहस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं। एक कंप्लेंट सर मैं पढ़ा था अंडर सेक्शन, में स्किप कर देता हूँ, was filed before a magistrate at Lahore by Mr. इफ्तिखार अहमद तारी, the complainant against the appellant so and so। अब मैं इसमें वो आ जाता हूँ जो कंप्लेंट इन्होंने की है। मियां अहमद तारी ये कौन आ गया? ये कुछ दूसरे थे जी, ये बेटा ये है द कंप्लेंट ऑफ अहमद रजा कसूरी, पैरा 32 करना क्या चाहते हैं जी। बड़ा करना was referred to a division bench consisting of Mr. K. M. Samdani J and Mazrul Haq J। अब यहाँ मैं
پاز کروں گا اور میں سبمٹ کروں گا کہ وائی notice was not issued to the accused. Had it been issued, they could say, sir, if you want to transfer this case, so send it to the case where the complaint regarding the same incident is pending. So that was avoided because those two honorable judges, I believe the acting Chief Justice was not inclined to include them in the bench. So that is, اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ باعث کہیں گے، ٹیکٹ کہیں گے، کلیورنس کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں کہوں گا. اب آپ اس کو کچھ کہتے ہیں آپ. سو میں کہتا ہوں دس از اے کلیور موو. جی سر. یہ کلیور چیز ہے نا جی، یہ باعث سے آگے بات ہے. باعث تو ایک چیز ہے نا، آپ کا ایک ویکٹ ہے کچھ اسکپ کر گئے، یہ تو آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وائلیشن آف ڈیو پروسیس ہے. وائلیشن بھی نہیں ہے. وائلیشن تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے کاپی چاہیے، مجھے نہیں ملی، مجھے یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. یہ وائلیشن نہیں ہے، کہ ایک goes to the root of a fair trial. ہاں بالکل. یہ آپ نے ایک کلیور لیا، because I can now read the mind of the judge as well. کہ وہ اگر نوٹس کیا گیا، so obviously the accused side will argue کہ sir, the private complaint is pending before a two-member bench. Refer this two-member bench. And in that two-member bench, one has already allowed bail to Mr. Zulfikar Ali Bhutto. وہ complaint کیوں two-member بینچ کے پاس ڈالا؟ اب پتہ نہیں وہ اس وقت چلی گئی ہوگی، پتہ نہیں چلا ہوگا، یہاں کوئی بات ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہوگی، میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کرتا. میں تو وہ باتیں کر رہا ہوں جو فیکٹ ہیں. اس میں ایک جج نے بیل دے دی نا. نہیں، یہ کمپلینٹ میجسٹریٹ کے پاس نہیں جاتی، وہیں تھی نا جی پینڈنگ. یہ تو ہائی کورٹ کے سر وہ ٹرانسفر ہوگی نا. نو ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی. نہیں سر، ہو گئی ہے. آپ ایسا کریے کہ 56 پیج کے اوپر سے چوتھی لائن پڑھیے، ابھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کمپلینٹ جو احمد قصوری نے دائر کی تھی وہ کہاں گئی. یہ پڑھیں. سملرلی ایک کمپلینٹ وہی ہے ہاں یہ پڑھیں یہاں سے. ہاں میں سر وہ جلدی میں آتا ہوں نا تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جاتی ہے. ابھی کلیئر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، میں نے سارا پڑھنا تھا، مجھے ڈائریکشن آ جاتی ہے. ہاں پڑھیں. سملرلی یہ سر چوتھی لائن پیرا 56 سے. Similarly, a complaint case filed by Ahmad Raza Kasuri in regard to the murder of his father, Nawab Muhammad Ahmad Khan, was transferred this court by order dated 15th of August 1977. پہلے ہی ہو گئی تھی یہ پہلے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں پہلے ٹرانسفر ہو چکی ہے نا. اسی لیے جو میں نے جو آرگومنٹ جناب کو دیا کہ موو کیا تھی، کرنا کیا تھا،
क्योंकि उस 2 member bench में से one honorable judge Justice Samdani allowed bail to Zulfikar Ali Bhutto in the state case. आप कहना ये चाह रहे हैं कि पहला उनका मूव ये था कि हम ये कंप्लेंट आए मैजिस्ट्रेट से हाई कोर्ट आ जाए, आ गई। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उनको बेल मिल गई, जब बेल मिल गई दे सेड ओके लेट्स ट्राई अनदर थिंग, उनने फिर एक और मूव किया और उनने जो मेन केस था उसको ट्रांसफर किया नोटिस के बगैर। ठीक, समझ आ गई ना जी बात, वेरी क्लियर। और ये भी बता दें क्या क्या मैजिस्ट्रेट से वहाँ हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकता था? ये भी आपने अब ये बिल्कुल हो सकता है सर। अब उसमें लेकिन एक बात और क्लियर भी हो गई ना जी सर, कि एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट के नोटिस में था कि एक कंप्लेंट यहाँ पड़ी है और नूरलाई केस के तहत उसको साथ चलना चाहिए नहीं मगर सर वो तो देखे ना, अब मैजिस्ट्रेट तो ये ऑर्डर नहीं कर सकता ना कि इसको ट्रांसफर कर दें हाई कोर्ट के पास। नहीं हाई कोर्ट के पास है ना जी, मगर वो दूसरा चालान जब आया मैजिस्ट्रेट के पास, उसके पास तो ही हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सेंड इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो तो अंडर द लॉ ही कैन नॉट लुक एट दिस कंप्लेंट। अब माय लॉर्ड जस्टिस Yahya हैज वेरी एप्टली समराइज्ड द सिचुएशन एंड आई थिंक ही इज fully understood कि what was the move, though it was clever move. What was the intention? No, since your lordship is looking for malice, for touching the merits of the case, so step by step your lordship will feel that malice is not clear, but it is floating on the surface of the record. In every respect. ट्रांसफर हुई थी विदाउट नोटिस, कंप्लेंट भी विदाउट नोटिस। कंप्लेंट तो सर कंप्लेंट में तो क्योंकि कंप्लेंट में उस वक्त तक एक्यूज हैज नॉट बीन समन्ड, उसमें तो वो अभी 202 की इंक्वायरी नहीं हुई ना, तो वो तो था ही कोई नहीं, वो हो गई अगस्त में ट्रांसफर हो गई। उसमें मेन कॉग्निजेंस लेने से पहले ट्रांसफर हो गई जी, कॉग्निजेंस तो नहीं ली ना जी उन्होंने, तो अभी कुछ भी नहीं किया, मगर वो अब उसको अगर आप इंटरप्रेट करेंगे 526 को अभी पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसमें तो और बहुत बातें करनी है, इस पॉइंट पे बहुत आर्गुमेंट्स है, ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। फर्स्ट स्टेप में तो मैजिस्ट्रेट ने सेशन जज को भिजवाना था, वहां से फिर हाई कोर्ट जाना था स्टेप। हाँ जी, तो अभी उसी के पास थी ना वो कंप्लेंट, उसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल ये रिकॉर्ड यही कह रहा है कि फिर आगे कहानी होगी। वो कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड पे नहीं है कसूरी साहब वाली, वो मैंने लेटर भी लिखा था आपके ऑफिस को, उन्होंने मुझे कुछ 10 कॉपियां भेज दी, सारी एक एक सफ़ा देखा, वो कोई तारी साहब की कंप्लेंट है, कोई किसी और की कंप्लेंट है, जो कसूरी साहब ने फाइल की थी वो रिकॉर्ड पे नहीं है, और उस कंप्लेंट पे हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हुए वो भी रिकॉर्ड में। अब तो मेरे पास जो कुछ है मैं तो आपको उससे भी असिस्ट कर रहा हूं कि जनाब ये स्टेट ऑफ अफेयर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक एक स्टेप जरूरी है, एक एक स्टेप जरूरी है। अगर जनाब चाहते हैं कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाए तो ये इसमें बहुत जरूरी है कि इस चीजों को देखा जाए। सर अब मैं पढ़ूं सर। By the order of so and so, another complaint Sayyid Zafar Hussain Shah versus Zulfikar Ali Bhutto, ये भी कोई और है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। The complaint of Ahmed Raza Kasuri was referred to a division bench during the pendency of this complaint. Now this is relevant, sir. Para 33. The police filed an incomplete challan before a magistrate on 11th of September. ये 12th को है, उन्होंने 11th लिख दिया। The magistrate acting under section 193 of Code of Criminal Procedure, हालांकि एक्ट उसने 190 में किया, ये जज साहब ने 193 लिख दिया। The same day to the Court of Session, the state filed an application for transfer of this case to the original site of the High Court, which came up for hearing on the morning of 13th of September 1977. The acting Chief Justice passed an order of transfer and constituted a larger bench of 5 judges for hearing the matter, obviously on the same ground on which number of other cases against Mr. Bhutto and other has been transferred. अब वो कौन सी ground है? We don't know. Nothing is on the record. उन्होंने कहा कि वो भी हुए थे तो ये भी कर दी। अब जनाब इसका 34 का मैं पढ़ूंगा, क्या पूरा तो मैं नहीं पढ़ा, मैं ऊपर से 7-8 लाइनें छोड़ के नीचे जहां पे 10:30 AM लिखा है ना जी, एक लाइन में 10:30 AM, मैं इससे आगे पढ़ूंगा। There is nothing singular or strange in the order of transfer which was considered expedient in the interest of justice, as Mr. Bhutto, who had held some highest office in the country, was an accused.
In view of the importance of trial, the constitution of a larger bench of 5 judges was considered necessary. The constitution of such a bench should inspire more confidence. اب یہ ملزم کو بھی یہ ایڈوائس دی جا رہی ہے کہ 5 ججوں پہ اعتماد زیادہ کرو. To the more confidence rather than create an apprehension in the mind of any property. The apprehension of the petitioner's partiality and prejudice of acting Chief Justice on this ground is not at all reasonable. And another ground, transfer ہو گیا وہ پڑھ دینا. ہاں یہ سر اب میں سر باقی ابھی سکپ کر رہا ہوں. پیج 63 جس میں یہ ٹرانسفر کے بارے میں بات آ رہی ہے. پیج 63 سر پیرا 42. بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے سر, بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا پینفل ہے, بڑا پینفل ہے پرسنلی فار می سر. An other ground is that the order of transfer has been passed without notice to the accused petitioner. No such notice was required in the present case. اب آپ یہ بتا دیں, میں نہیں, I can't comprehend sir کہ 5 judges of the High Court headed by the Chief Justice who by that time was judge for the last 15 years, they are writing no notice was required. اور اس سے پینفل بات اگلی ہے. Under section 526(6) provide for a notice to the public prosecutor on the application of accused person for transfer of a criminal case. اب جناب یہاں پہ میں ذرا 526 کا 6 پڑھ دوں گا تاکہ جناب کو پتہ چلے پھر کہ کیا ہوا ہے. جناب اب آپ وہ جو کر رہے ہیں نا کہ موو کیا موو ہے, اب یہاں سے کلیئر ہوتی ہے. یہ جناب 526 سب سیکشن 6 سر پڑھوں سر جی. Notice to public prosecutor of application under this section. Every accused person making any such application shall give to the public prosecutor notice in writing of the application together with a copy of grounds on which it is made, and no order shall be made on the merits of the application unless at least 24 hours have elapsed between giving of notice and hearing of application. اس نوٹس کو انہوں نے بنا دیا. اب ذرا دیکھیں اب اس کو جناب کیا کہیں گے, ignorance. If it is ignorance of all the 5 judges. نہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ نوٹس صرف پروسیکیوٹر کو ہوگا. پروسیکیوٹر کو نوٹس ہے ایکیوز کی طرف سے, جس طرح جناب کی کورٹ میں ہے کہ جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ ایک کاپی بھیجتے ہیں نا. اب اس سے بڑی, I don't want to use this word, but بددیانتی کیا ہوگی. What is mentioned if the state applies for the transfer? If the state applies for yes, وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ نوٹس تو یہ تو کورٹ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے, یہ تو ایکیوز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر وہ کرے گا تو وہ نوٹس دے گا. وہ کہتے ہیں کیونکہ اسٹیٹ کو نوٹس ہونا ضروری ہے, ایکیوز کو نوٹس کی. ملک صاحب یہ تو آپ اس پہ آ گئے نا, مگر گراؤنڈز آف ٹرانسفر جو ہیں وہ کہاں ہیں, وہ 526 میں دیے گئے 1 2 3 4 5. سر میں آؤں گا, تو ان کا تو تذکرہ ہے ہی نہیں. میں آؤں گا, میں تو آپ کو دیکھیں, میں تو اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے بٹ ضروری بڑی ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ, whether for this presidential reference or not, but good history lesson. Yes sir, بالکل ہے. And for students of law. بالکل ہے. میں کہتا ہوں, as well as for judges. میں کہتا ہوں کہ اس کو کمپلسری کر دیا. I taught this case at slums for 4 months. For 4 months. میں تو کہتا ہوں اس کو کمپلسری کر دیں کہ یہ جو بھی کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرنا چاہتا ہے یا جس کو بھی آپ ایلیویٹ کریں وہ یہ کیس پڑھ کے آئے. ویسے میں یہ سوال پوچھتا تھا اکثر, وہ جب میں اے ایس سیز کو انرول کر رہا تھا, خاص طور سے جو کرمنل کیسز کرتے ہیں کہ آپ نے ججمنٹ پڑھا ہے یہ والا, اور شاید ہی کسی نے پڑھا ہوتا تھا. نہیں وہ کسی سر کیس کو ایک اور میں ریکویسٹ کروں یہاں پہ,
کیس اگر آپ نے کرمنل کیس کو سمجھنا ہے تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جج سے آپ ججمنٹ سے کچھ نہیں پتہ چلے گا بیکاز دیٹ از دا کنکلوژن. آپ ریکارڈ دیکھیں, آپ ایویڈنس دیکھیں, وہاں سے سمجھ آتی ہے. اب یہ اگر انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ انٹرپریٹیشن مان لی جائے, اب میں آگے بڑھیں سر, آگے سب سیکشن 3 of section 526 read with clause E of section 526(1) authorize the High Court to transfer to it a case either on the application of a party or on its own initiative whenever it is expedient in the interest of justice. These provisions authorize the High Court pass an order without notice. اب اس کا کیا کریں؟ مگر یہ سب کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ٹرانسفر تو کیس آلریڈی ہو چکا ہے. وہ کہنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ آپ کے پاس اپلیکیشن آ گئی. وہ تو اپلیکیشن 22 پہ آ رہی ہے. نہیں, اس پہ آ رہی ہے نا جی. 2 درخواستیں ہیں, میں نے پڑھی پہلے آپ کو, اس میں یہ اسپیسیفک گراؤنڈ ہے کی جانب سے. نہیں سر, نہیں, میں تھوڑا سا کیس ٹرانسفر ہو گیا, اس نے اعتراض کیا without notice to the accused, not 1 but 5 accused. At that time there were 7 accused. Then when it was in the High Court, when this was in the High Court, an application was filed in the High Court. نہیں, میں ذرا سا کنفیوز ہوں. وہ جو آرڈر آپ نے جو سب سے پہلے پڑھا تھا, ذرا اس آرڈر پہ واپس آئیے ایک سیکنڈ کے لیے. ایک نمبر پیج پہ جی, وہ ایک نمبر پیج. جی فرمائیے سر, میں میرے جزوانی یاد ہے, آپ پوچھیے. is transferred to this court. Yes. ذرا سے میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. is transferred to this court for trial. Now the same bench is hearing that it has been wrongly transferred. ایک یہ پوائنٹ ہے, وہ جو اپلیکیشن میں جو تھرسٹ آف دا میٹر ہے آن دی پریجوڈس اور بائس آف دی ایکٹنگ چیف جسٹس, یہ تو آرڈر ہو چکا ہے سر. اسی تو پھر یہ وہ اتنا لمبا آرڈر, اب وہ ایکچولی کیا کر رہے ہیں, اب وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. unless I'm wrong. بالکل ٹھیک, بالکل 100% ٹھیک ہے. آپ ہوا یہ کہ ٹینٹیٹیو آرڈر نہیں ہے, یہ دیکھیں سبجیکٹ ٹو نوٹس لکھا ہے is transferred to this court for trial. Full stop, ختم ہو گئی. نہیں, that was a short order. It says for short order we giving reasons now. Page 35 پہ دیکھیں نا. سر نہیں, وہ دوسرا دیکھیں منظور ملک صاحب, go back to page 2. Page 35 says so. نہیں سر, نہیں, I'm talking about the order on page 2 in view of the submissions made by volume. یہ تو conclusive order آ گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سر میں عرض کرتا ہوں. Then he turns it around, says for the short order passed earlier. It's not a short. He's saying that. From where you are reading, sir? Sir, page 35 volume part 9. ذرا دیکھیں نا, انہی اپلیکیشنز پہ پھر آرڈر آ رہا ہے نا. نہیں, یہ وہ اپلیکیشن نہیں ہے سر, وہ اپلیکیشن ہے 127T of which have already been dismissed by a short order. وہ تو اور ہے نا, یہی سی ایم ہے نا, پہلے ڈسمس یہی سی ایم ہے, نیچے ان کا شارٹ آرڈر کے نیچے آرڈر. میں شاید اپنی وضاحت نہیں کر سکا. میں اگر آپ کو پیج نمبر 2 پہ ہم جائیں واپس, جو ہے in view of the submissions made in the petition, the case is transferred to this court for trial. Full stop. Concluded matter. Now, in the subsequent order, they're justifying this order. وہ اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں, میں which was strange. سر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ایکیوز کی طرف سے یہ جو مسلینس اپلیکیشن لکھی ہے یہ بھٹو صاحب نے, یہ وہ یہ ڈفرینٹ ہے, اس کو بھی کور کر رہے ہیں. اب وہ کیوں کر رہے ہیں, اس کو ڈسمس کیا دونوں اپلیکیشن کو شارٹ نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ if it is to be treated as an appeal it should have been before some other bench. پھر ٹھیک ہے کیونکہ یہ خود ہی پھر اس کو ریزننگ دے رہے ہیں. سر وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کہ بھٹو صاحب prayer was that this court shall not hear this matter. He was alleging bias, and for alleging bias this was one of the ground of bias. But against one judge تو obviously sir, اگر انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے میں بہت سی چیزیں کر دی. سر وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, وہ تو پھر جب ایک آپ چیف جسٹس کو کریں گے تو باقی تو شامل ہو ہی جائیں گے نا, وہ تو سارے شامل ہو جائیں گے اس میں. وہ میں
मैं जो बात कर रहा हूँ, आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप कोई इंसिनुएशन तो नहीं कर रहे हैं इधर? ये तो मुहावरा है जी, जो समझना चाहे मुझे मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जिसने मुहावरा हमारी अदालत बड़ी डेमोक्रेटिक है, हर जज अपने डिसेंट भी करते हैं, आप नोट कर रहे होंगे। ये तो बड़ा हेल्दी साइन है ना जी। डिसेंट करना का मतलब है कि यू आर अलाइव, आप एक जो जिंदा है वही डिसेंट करेगा ना। जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पांव से निकल जाता है, जो डिसेंट करते हैं वो हाथी के पांव से निकल जाता है। अब आप मैं नहीं, चले वी मेक सम प्रोग्रेस, ज्यादा लिबर्टी नहीं लेना चाहता। अच्छा सर, वुड यू लाइक टू टेक अ ब्रेक एट दिस पॉइंट? कर ले जी, कर ले। नहीं, क्योंकि आप काफी देर से खड़े हुए हैं सर, मेरे नहीं हमें है फिक्र। कोई कर लेते सर, आप बता। मेरा ख्याल है इस पॉइंट को खत्म कर लें, ये जो ट्रांसफर वाला। चले ये इसको खत्म, चले बिल्कुल ठीक है, खत्म कर, बिल्कुल ठीक। आई एम विद यू सर, आई एम विद यू। ये खत्म कर लें। नो सर, नाउ आई विल लाइक टू रीड सेक्शन 526. This is the point. I hope I am clear on the change of investigation, re-investigation, transfer of the case, no notice to the accused, no notice to anybody, then justification that notice is not required. So I am clear. Now sir, as your lordship has rightly observed that this provision has not authorized the High Court to transfer any case without any justification. There must be some reason. There are grounds which have been mentioned in this section. Okay, under such and such ground, a case can be transferred to the High Court. And those grounds are question of law of unusual difficulty, general convenience of the party, such order is expedient in the end of justice. आपने पहला वाला छोड़ दिया, वो भी सब कर ले, उसको भी शामिल कर ले। मेरा मैं जिस पॉइंट पे जल्दी fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court. ये बिल्कुल ठीक है सर, वो आप काफी चीजें उसमें, अगर ये लिखना तो चाहिए जजेस को। सर मैं तो कहता हूँ लिखना चाहिए नहीं, ये तो this is the mockery of law if you pass an order just by saying in view of the submission made in the application it is transferred, and that too by a 5-member bench headed by the Chief Justice, and in a case where death sentence is provided. So but anyway, this is the reality you people are facing now. This is the reason why people say this is a judicial murder. This is the reason. These are the grounds. अब जनाब इसका मैं पढ़ूंगा सब सेक्शन 2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। When the High Court withdraws for trial before itself any case from any court, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case has not been withdrawn. It's a very important, sir. अब your lordship have noted that High Court has power to transfer a case from magistrate to the court of session, from the court of session to another court of session, but this provision is not for that court. This is for the High Court. If High Court withdraws a case from any court to it, it will follow the same procedure which is prescribed by that court. Court of session का procedure, session या magistrate का, अगर आपने magistrate से किया है तो you will follow the procedure of the magistrate. This is very important. Now I will draw your attention, your lordship, to section 374. Kindly see what is 374. यही जो है कि confirm कौन करेगा death penalty. नहीं सर, मैं अभी आता हूँ, बड़ा ही it is a novel point. High Court 5-member bench उसको death penalty दे रही है तो confirmation क्या Supreme Court 374, 376. सर मैं सर इजाजत दें मुझे। Section 374 Code of Criminal Procedure, इसका कैप्शन है सर, sentence of death to be submitted by the court of session. When the court of session passes sentence of death, the proceedings shall be submitted to the High Court and the sentence shall not be executed unless it is confirmed by the High Court. आगे सर वो procedure सारा दिया, वो क्या करेगी High Court? अब now this provision is part of procedure of court of session.
your Lordship has gone through many judgments. Every judgment of the session judge or additional session judge, at the end it is mentioned that reference is being sent to the High Court under the provision of so and so. This is part of procedure. So the question arises, if this case, a case where sentence is death is provided, is transferred to the High Court, where this provision will go. Then the number of questions, related questions arise. Firstly, yes, sir. Are you saying that under 526, no murder trial can take place? That could be number one. No murder trial can be transferred to the High Court. Ek second, let me just finish. One interpretation could be, because if you read the two sections together, since confirmation is required and there is a possibility of a capital punishment being given, therefore High Court should never transfer to itself a murder case. That could be one interpretation. The second interpretation could be, no, you can still transfer it, but then the High Court is not actually acting as a High Court, but it is actually acting as a Sessions Court, and then the matter will have to go to another bench of the High Court, exercising powers under the High Court. Very right. Very right. I mean, I don't know. Or since the third one could be, since this has been done under the 526, this is a redundant provision. These, I think only three scenarios. Very precisely. What is your answer? मेरे दोनों ही हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि इसको correct करने के लिए, it is not a transfer of the trial, it is withdrawal of the trial. Same ठीक है जी. No, transfer is something else. नहीं सर नहीं, एक वो पढ़े ना जी. इसको आप अटेंड कर लें पहले. है ना, विड्रॉल है, एक मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आपने अपने पास ले लिया, वो किसी की एप्लीकेशन पे लिया या ऑन योर ओन इनिशिएटिव, वो एक ही चीज है. विड्रॉल और ट्रांसफर मतलब ये है कि हाई कोर्ट में जाग चला गया ना जी. अब ये अग्रीड के प्रोसीजर ख्याल में अभी चौथा सिनारियो वो लार्जर बेंच का है. आप हमें ये जरा मैं जरा यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. जी सर, आप प्रोसीजर ऑफ प्रोसीजर तो वही रहेगा ना. मैं यही कह रहा हूँ ना कि सेक्शन 374 इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, एंड देन देयर इज अ वेरी गुड जजमेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन, ऑथर बाय माय लॉर्ड मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह. Thank you, sir. I am just reading that. You're only concerned today with Shah Sahab. This is PLD 2021. नहीं, पहले ये आप हमें बताएं ना. क्या सर, ये सुनने में बताता हूँ वो बात. आपकी बात मैंने नोट कर ली है, मैं उसका जवाब देता हूँ, मगर ये थोड़ा सा जो PLD सर 2021 सुप्रीम कोर्ट 600 यही है. अब इसका पैरा 6 है जी, फिर 7, 8 दे आर रेलेवेंट. आपका जजमेंट है? नहीं, मेरा नहीं, शाह साहब का है. शाह साहब इज द ऑथर जज है. आप सिग्नेटरी थे इसमें? हाँ, ये बात ये सही है, बट आई डिड नॉट ऑथर. व्हिच पैराग्राफ? सर पैरा 6 से अगर कहते मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिएगा. नहीं, सिर्फ बता दें क्या पॉइंट. पैरा 6 है, ये इन्होंने कहा कि ये एक ड्यूटी है, ये और ये ड्यूटी उससे बड़ी है. अपील जो है वो राइट है. This is the duty. And from my personal experience as a judge of the High Court, sir, I decided 2 murder references where there was no appeal. No, kindly look at the wisdom. There was no appeal. 2 cases. I decided as the judge of the High Court with perhaps my Lord Justice Tariq was with me or somebody else, I don't remember. But in both these cases, both the accused were acquitted. Both the accused. So this is the duty, that is a right. And it is clearly mentioned that if this reference has been sent, death sentence cannot be executed unless references. There is no bar if no appeal has been filed. अपील के लिए नहीं है, ये रेफरेंस के लिए. Now coming to that point, कि first interpretation, my interpretation, that if we read these 2 provisions together, so I will submit that a case where death sentence is provided cannot be transferred to the High Court.
because of 374, because otherwise it will become redundant. अगर उसको रिवीजन तो अप्लाई नहीं हो गया ना, वो कौन सी सर? वो भी है, वो भी पॉसिबल। सर अब 5 मेंबर बेंच सुन रहा है तो उसका 10 मेंबर बेंच 9 मेंबर के पास दाखिल हो जाता है ना। ये एक रिलेटेड क्वेश्चन इन पाकिस्तान जुडिशियल हिस्ट्री, has a murder trial ever been conducted by the High Court? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें murder trial मैं यही अर्ज करने लगा। जो हमने रिसर्च किया, मैंने नहीं की, क्रेडिट गोज टू दीज टू यंग बैरिस्टर्स। इंडियन जुरिस्डिक्शन में एक भी केस नहीं है, ठीक है, छोड़ो, इंडियन जुरिस्डिक्शन में नहीं है, एक भी केस नहीं है सिंस 47 टिल 1970। हमने 77 तक देखा ताकि वो पीरियड रहा। पाकिस्तान में 2 केसेस हैं, दो। एक केस है कराची का, that was against Gohar Ayub, son of former President Ayub. Some private complaint was filed, I think that was in connection with the election of 64. Karachi incident था कोई, उसके complainant ने फाइल की कि जनाब मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो गौहर अयूब ने भी कर दी, दोनों ने कर दी। दैट केस वाज ट्रांसफर्ड। मर्डर केस था, ये मर्डर केस था, कंप्लेंट थी अभी वो। दैट मैटर वेंट टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कंप्लेंट केस वाला था उसकी पिटीशन खारिज कर दी, और दूसरी उन्होंने कहा कि ठीक है, ये अभी कॉग्निजेंस उसने इंक्वायरी नहीं की थी उसमें, वो जजमेंट हम दे रहे हैं जनाब, वो खुद देख लीजिएगा। रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड नहीं, रिपोर्टेड है जी। साइटेशन दे दें, बताइए जी, मुझे दे दो। 1968 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, ये कराची है ना, 16775 और ये सुप्रीम कोर्ट में क्या गई? 1675 सर, 1675। वेरी राइट सर, 1675। इसमें क्या था कि यू कैन डू इट? हाँ जी, हाँ जी, इट कैन बी ट्रांसफर। यस, उन्होंने ये बात नहीं कि इस इशू को नहीं डिस्कस किया कि 374। अच्छा, ओके, तो आप खाली बता रहे हैं ऐसा केस हुआ था? नहीं, ये हुआ और इसमें दोनों पार्टी ने कहा, मगर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड करके कहा मैजिस्ट्रेट। इसमें कंफर्मेशन की बात का क्या हुआ? कौन सी कंफर्म? वो फैसला ही नहीं दिया, अभी तो ट्रांसफर हुआ केस, ठीक है, उस ट्रायल की, वो तो फिर वापस हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, PLD 1965 सुप्रीम कोर्ट पेज 496। सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेन 1965 कैसे? 68 का तो हाई कोर्ट का केस सर, वो 65 में फरवरी। अब आप क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट लेट हुआ। ये रिपोर्ट लेट हुआ, रिपोर्ट। PLD कब की? PLD है सर 1965, ये रिपोर्ट लेट हो गया, वापस भेज दिया, वो वापस भेज दिया। पेज सुप्रीम कोर्ट पेज 496। ये रीजंस क्या दी थी मलिक साहब वापस भेजने की? सर वो रीजन इसका मैडम ये है कि उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मजिस्ट्रेट ने अभी तक उस पर कुछ किया ही नहीं है, अभी तो इंक्वायरी नहीं की, तो कैसे ट्रांसफर होगा? प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं। और दूसरा केस ट्रायल की और कोई कुछ नहीं, एक और है जी, वो है केस, वो जो साबिक गवर्नर थे अमीर मोहम्मद खान, उनका केस भी ट्रांसफर हुआ था हाई कोर्ट में, मगर वो भी दोनों की रिक्वेस्ट पे हुआ था, कंप्लेनेंट भी और दूसरा भी। उसका ट्रायल हुआ नहीं हुआ ये कुछ नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने अपने तौर पर भी हाई कोर्ट से पता करने की कोशिश की तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हमें, बट वो बरी हो गया मेरा, मगर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ट्रायल हाई कोर्ट में हुई थी, हियरिंग दी केस, और वो उसमें बरी हो गया। असद, मलिक असद was the accused. That is not a reported judgment, इसलिए हमें नहीं मिली। I don't think it was reported. It was not. But it was. This question was not considered. No. Self defense was taken. अब वो भी जजमेंट लिख लीजिए, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, कौन सी क्या करती हूँ, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1969 पेज 1058 लाहौर का केस है जी। ये अमीर मलिक, यही वाला अमीर नहीं, मलिक क्या नाम ने बताया? मलिक असद, ये वाला केस है असद का जी। ये वैसे चौधरी साहब फरमा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ही फरमा रहे हैं। मुझे भी ऐसा बताया गया कि वो बरी हो गया, मगर मेरे पास जजमेंट नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं बताई बात, क्योंकि मैंने कहा कि फिर वो डिफिकल्टी है। बट इन
اینڈ اس میں بھی دونوں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں. اور یہ جو پوائنٹ میں نے آج ریز کیا 374 کا, دس ہیز ناٹ بین کنسیڈر ان اینی ججمنٹ. وہ اگر اکٹھے لوگ ہی تو ویسے ہی نہیں, وہ ہو گیا نا جی. نہیں, پہلے بھی دونوں نے کہا نا جی, دونوں کیسوں میں. In this jurisdiction, should we expound on this or not? In this case? No, not at all, not a touch even. آپ دیکھ رہے ہیں, میں کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں, ہم آپ جو jurisdiction استعمال کر رہے ہیں advisory, should we expound on section 526 read with 374 or should we not? I say you must. Sir, you are here to do complete justice. Not with the people, but history as well. Or something, which has not been considered by any court before. نہیں, یہ ریز کہاں سے کنسیڈر ہوتا جب آپ نوٹس ہی نہیں کر رہے. Is this a good time to break now? میں تیار ہوں جی, جب ابھی کر لیں. نہیں, میرا مطلب کہ آپ کا کوئی سیکوینس نہیں توڑنا چاہتے ہیں. سب یہ ہو گیا جی, یہ ٹرانسفر کی حد تک میں آئی تھنک آئی ایم کلیئر. 374 کو بھی آپ نے میٹ کر لیا کہ وہ نہیں ہو سکتا, اور آپ کا خیال یہ ہے کہ سیشن ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل مرڈر کیس جو ہے اس کو ٹرائل پہ نہیں جاتا. نہیں, میرا یہ ہر کیس جس میں ڈیتھ سینٹینس ہے. Yes. And the second, the interpretation I will adopt of my judgment. Very good interpretation. Very good interpretation. I must appreciate. Finally. Thank you, sir. Thank you. آدھا گھنٹے میں ٹھیک ہے. Is that good enough? آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے جی. Is that good enough for you? 2:30 بجے انشاءاللہ. 2:30. Thank you. دیکھ لینا, خیر رکھ لینا کاشف صاحب. میں اس کی دے جی. میں proceed sir? جی پلیز. Sir, now I will draw your attention. آپ سمرائز کر دیں گے جو صرف پوائنٹس تھے جو ابھی تک آپ نے کیے ہیں. ہاں بس ہم صرف جسٹ 1.123 آپ نے پہلے بتایا یہ کر لیے تھے ویسے جیسا سمری. نہیں, no. Sir, number one submission was that this investigation was closed in accordance with law by the order of the magistrate, but re-investigation started without any authority, without any written order from any quarter, and without getting any order from the magistrate. This was my first submission. And adding here, investigation started on 24th of July 1977, whereas record of the case was taken
on 8th of August 1977. So this was my first submission. Next submission was, sir, it was incomplete. Challan was submitted before the court on 12th of September 1977. It went to the session judge on the same day, and on the very next day an application filed by the state for transfer of this case was allowed without any reason and without any notice. And accused were summoned to appear before the High Court as a trial court, and thereafter an application was submitted by Zulfikar Ali Bhutto where bias was alleged, and this was one of the ground of bias that no notice was issued to me. And while deciding that application, they concluded that under section 526 no notice is required to the accused, and notice is only to the prosecution, which is not a bias, which is not a mistake, but I don't know what is the appropriate word to call this move of the prosecution. So sheer blatant violation of the law, blatant. This, if you talk to a student of law, he does understand what is Audi Ostrom Partum. Such an important point. When they were made respondent by the state, no notice was issued. And then they concluded this, and thereafter my submission was 374 wala. With transfer, sir. My submission was that under section 526 subsection 2, when High Court withdraws a case either on its own or because of transfer, High Court is required to follow the same procedure which is prescribed by the law for that particular court. And in this situation, this is part of the procedure of the Court of Session, that they are required to submit a reference to the High Court, and that sentence cannot be executed unless it is confirmed by two judges of the High Court. It has nothing to do with the appeal. So these was precisely my submissions. Now, sir, I will move. And it is quite clear कि इस केस में डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के बारे में कोई ऑर्डर नहीं, वो हो सकता ही नहीं है ना जी, रेफरेंस नहीं है तो ऑर्डर कैसे होगा? देखिए, ये तो अगर ट्रायल एक जज ने किया है तो और उसने डेथ सेंटेंस कर दिया तो द रेफरेंस कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड बी प्लेस्ड बिफोर टू जजेस. तो रिडंडेंसी नहीं, थोड़ी मुश्किल, उन्होंने किया नहीं, वी आर विथ यू टू दैट एक्सटेंट. तो खत्म हो गई ना जी, वो तो करना जरूरी था. वो भी आप फरमा रहे हैं कि वो ये हो ही नहीं सकता है इस केस में. मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि जब जैसे या तो देयर इज एन अदर इंटरप्रिटेशन व्हिच हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय माय लॉर्ड चीफ जस्टिस कि High Court at that particular time is acting as a court of session. So they are required to send a reference to another bench of the High Court. यही हम भी यही कह रहे हैं. ये होना चाहिए, मतलब नहीं हुआ ना जी. दूसरा मैं ये कहता हूँ कि दूसरी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर हम 526 को 374 के साथ मिलाकर पढ़ें तो you can safely draw an inference that the case where sentence of death is provided cannot be transferred. Equal 374 in any case is far more important. मेरे साथ थोड़ा सा ये कानून में किया जाता है एक्सेप्ट मर्डर केसेस. नहीं, जैसे आपने कहा दो एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है सर. वो बस अब देखें ना जी, ये तो फिर आपने इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल पे चलना है ना कि जब दो प्रोविजन है तो उसमें क्या करेंगे आप. ये तो मेरे ख्याल में सिंपल सी चीज है. मंजूर साहब, इसमें जरा सेक्शन 374 की जो लैंग्वेज है ना, ये लिखा है व्हेन द कोर्ट ऑफ सेशन पासेस सेंटेंस ऑफ दैट द प्रोसीडिंग शैल बी सबमिटेड टू द हाई कोर्ट. अब इसमें अगर हाई कोर्ट खुद डेथ सेंटेंस तो यही मैं कह रहा हूँ ना जी, वो मैं बता रहा हूँ उस पर वो साइलेंट है इस पॉइंट के ऊपर. और आपने कहा कि सब सेक्शन 3 के अंदर 526 में लिखा हुआ है कि वही प्रोसीजर फॉलो करेगी. तो इसके अंदर 2 में लिखा है. तो अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो सेंटेंस देंगे ये तो हाई कोर्ट में जानी है. अब हाई कोर्ट की कंफर्मेशन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. नहीं, मैं तो ये नहीं, ये 526 कह रहा है, अपील का तो 526 जो कह रहा है सर, वो ये कह रहा है कि यूं समझा जाएगा कि विड्रॉ नहीं हुआ, सेशंस कोर्ट ही सुन रहा है. यस, ये उसमें ये जो पॉइंट है
374 का कि फिर हाई कोर्ट अगर ये किसी के मर्डर के डेथ सेंटेंस देती है किसी को, तो फिर उसका कंफर्मेशन का जो प्रोविजन है वो इसके अंदर इम्प्लाइड तो लिखा हुआ है सर। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस वजह से ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इसको एक अलग पहलू है कि हो ही नहीं सकता, वही है। और सेकंड ये है कि अगर आपने कर लिया है तो फिर आप रेफरेंस भेजें हाई कोर्ट को। इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि केस 5 मेंबर बेंच हैज अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी, तो आपके ख्याल में अगर रेफरेंस जाता भी तो इंट्रा कोर्ट अपील तो है ही नहीं, हाई कोर्ट में ही जाता, नहीं वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना था ना। बिल्कुल यही रेफरेंस तो बिल्कुल कहीं भी भेजें। अब वो तो इसमें अगर मेरे ख्याल में शायद कुछ हमें जवाब का हिंट मिलेगा अगर हम सेक्शन 375 भी देखें। जी, क्योंकि हाई कोर्ट इज नॉट जस्ट अ रबर स्टैम्प बट इट कैन डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। बट मैंने तो पहले बताया था जनाब को कि प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑनवर्ड। कंफर्मेशन इज जस्ट यस कंफर्म, नो कंफर्म, दे कैन डू अदर थिंग्स आल्सो। एविडेंस भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, भेज सकते हैं। बड़ा ये वो तो मैं पढ़ना चाहता नहीं, तो था। अच्छा इससे एक और बात उठती है। जी सर। एक तो है सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक, बट I may be wrong, but जहाँ तक मुझे पता है, whether it's a trial by 3rd class, 2nd class, 1st class magistrate, additional session judge, or whatever, they're always by a single judge. Yes, ये वही है point. तो ये 5 member bench no concept, no क्योंकि वो कंट्रोल करना, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है, कोई कुछ सवाल पूछ रहा है। वो आर्गुमेंट भी प्लीज कंसिडर कीजिए। Because there are other provisions in the CPC where conduct has to be recorded or something. Unless there's some specific law which says this number of judges will be here. जैसे कि for instance treason case में 3 judges will hear it. तो वो तो अलग बात है, but normally there's a CRPC envisage a trial by more than one. इसमें है कि कंफर्मेशन 2 जज करेंगे। हाँ वो ठीक है। अच्छा सर, अब दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज कर रहा था कि आप इंडियन ज्यूरिसडिक्शन को देखिए, कितना बड़ा इंडिया है, तो वहां एक केस भी नहीं रिपोर्ट हुआ कि जो हाई कोर्ट में आया हो मर्डर का। क्यों? वो इसी वजह से नहीं आया कि ये चीज हो नहीं सकती। 2 प्रोविजन है ना, वो स्पेशल लॉ पे आ जाएगा। वो जो प्रोविजन 374 की है, हाँ हम कह रहे थे डिफरेंस है कि मार्शल लॉ नहीं लगते उधर। नहीं, मैं 2 केसेस जो दिए आपने वो शायद मार्शल लॉ का ताल्लुक नहीं था उनसे। बहरहाल नहीं, वो बहरहाल वो तो हुए कुछ नहीं जी उसमें तो, क्योंकि दोनों ने कहा वैसे था गौर अयूब साहब तो नहीं, उसमें तो बहस ही नहीं हुई ना इस पॉइंट पे। दोनों ने कहा कि ठीक है कर दो, उन्होंने कहा कर दो, फिर वापस चला गया। एक वापस चला गया, दूसरे में बरी हो गया। वो तो इश्यू नहीं आया ना जी। ये इश्यू तो कोर्ट को देखे, मुल्जिम का काम नहीं है कि वो कोर्ट को हर चीज बताए। दिस इज ड्यूटी ऑन द कोर्ट। अब मर्डर रेफरेंस देखना ये कोर्ट का काम है, मुल्जिम को नहीं पता हर बंदा। और फिर उस सिचुएशन को देखिए कि एक दिन एप्लीकेशन आ रही है और वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस अमीनुद्दीन कि हो सकता है ये 13 को ही आई हो, 13 को आई है ना, तो फिर वो 526 में 24 आवर्स सर वो मुल्जिम का अगर वो मुल्जिम देगा, अगर नहीं वो भी दे तो भी 24 घंटे से पहले नहीं होती। तो ये आप देखें ना कि, और उसकी मैंने वजह भी आपको बता दी एंड राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस ये या कि वो अगर करते तो फिर उन 2 जजों को शामिल करना पड़ता। यही बात, वो नहीं कर सकते थे कि एक ने बेल दे दी। तो ये तो इतना ज्यादा, इसके लिए तो मुझे रोक रहा है मेरा ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इसमें ये सिचुएशन लग रही है कि जब हाईकोर्ट ने ट्रायल अपने पास रख लिए तो उन्होंने स्टेटस सेशन जज का ले लिया। बिल्कुल वही। और उसके बाद फिर 377 में लिखा है कि कंफर्मेशन 2 और मोर जजेस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने वहां भिजवाना चाहिए था, जो कि नहीं भिजवाया। नहीं, तो अगर इसका मतलब मजीद मैं जस्ट बात बढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 375, 376, 377, 378, 379, 381 have been made redundant. सारा कुछ रिडंडेंट कर दिया। तो ये सारा उन्होंने जो तरीकेकार दिया है कि वो कम भी कर सकते हैं सजा। और फिर आप हेस्ट देखें ना, हेस्ट देखें कि जब आपके केस की फाउंडेशन ही गलत है, री इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजन कहीं हो कोई दिखा दे कि कंप्लेंट का क्या हुआ? सर वो कुछ भी नहीं हुआ ना जी, वो तो पड़ी रह गई, पड़ी रह गई। पता ही नहीं है, कंप्लेंट का रिकॉर्ड आपके पास नहीं आया।
वो पड़ी रह गई, उन्होंने उसको टच ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पैरे में लिख दिया कि जी नहीं वो नूर अलाई केस के फैक्ट्स डिफरेंट थे, इसके फैक्ट्स डिफरेंट है, ये ट्रायल हो गया। ये नहीं कि उसका हुआ क्या, कोई ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है कि उस कंप्लेंट का क्या हुआ। ये बेसिक प्रिंसिपल था कि सुनता तो एक बेंच ना, जब एक कंप्लेंट चली गई 2 मेंबर बेंच के पास तो सुनना तो उनको चाहिए था, या अगर आपने 5 बना लिए थे तो 3 वो भी शामिल कर लेते, वो नहीं किए गए। तो ये तो बायस, और जो आप फैक्चुअल लीगल बायस की बात करती हैं, मैलिस की बात करते हैं, ये तो मैलिस से ऊपर चली गई बात, मैलिस तो रहा ही नहीं। ये तो टोटल एक बिल्कुल आपने एक तय करके काम कर लिया कि यार लॉ और ठीक है। अब आगे मैं जो आपको बताऊं, नहीं फिक्स्ड भी नहीं सर, पेनफुल वर्ड्स हैं। What word would you use? मैं मुझसे ना करवाएं, मेरे लिए फिर पंजाबी में मैं कुछ कहूंगा तो वो फिर नहीं। ये बताएं कि कंप्लेंट तो फिर है ही नहीं ना रिकॉर्ड पे, नहीं आपके पास नहीं है। We don't know what's the difference between the complaint and the FIR. नो, सिर्फ एक पैरा है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो डिफरेंट चीज थी, उसमें मुलजिम और भी शामिल कर लिए गए थे, ये करके, इसलिए ये हाई कोर्ट का सही फैसला है कि ये कंफर्मेशन वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया नहीं। ये तो डिस्कस कहीं हुआ ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक कंफर्म पूछनी है कि सेंटेंस चली हो गई, सिलसिला हो गया, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं हो सकती, वो विदाउट कंफर्मेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हम ये कहें कि एग्जीक्यूशन जो है वो एब्सोल्युटली इलीगल, बिल्कुल इलीगल, एवरी स्टेप वाज इलीगल। अभी तो आप आगे आएंगे, स्टेप छोड़िए, मैं अल्टीमेटली कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन वो तो बिल्कुल इलीगल है। सर एक चीज इलीगल नहीं है, यहाँ पे एक इलीगैलिटी नहीं है। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट आउट करूंगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेते। फर्ज करिए कि जिस कुछ भाइयों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजा जा सकता था, हालांकि ऐसी कोई प्रोविजन नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 5 जजेस का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस कंफर्म कर रहे हैं ना, बेसिकली 3 ने तो बरी किया है प्रैक्टिकली, तो 4 कैसे कंफर्म कर सकते थे 5 वाले को? नहीं कर सकते। एक को तो 2 कर सकते हैं। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के फिर बेंच जो न्यूमेरिकल है वो टोटल स्ट्रेंथ पे तस्वर वो होगा। आप ये नहीं कह सकते कि 4, फिर तो वो 7। इस पे मैं तो यही तक कन्फाइन करूंगा। मेरी कंटेंशन तो यही है कि ये जो 2 प्रोविजन अगर आप पढ़ें तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोविजन एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ अपील, उसमें मुल्ज़म का जिक्र ही कोई नहीं है। इस तरीके से चलाया जाता, जब एक स्पेशल लॉ था एंटी टेररिज्म का जिसमें ट्रायल हाई कोर्ट चलाती थी, उसमें तो कंफर्मेशन उसी हाई कोर्ट से होती थी। नहीं, वो कहाँ हाई कोर्ट ने कभी भी नहीं स्पेशल लॉ के तहत जो 90s में थे। नहीं सर, नहीं कोई भी नहीं था। वो एक और वो सर वो थी स्पेशल कोर्ट, वो एक बनी थी स्पीडी ट्रायल कोर्ट एक्ट, 80s की बात है। ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं सर, नहीं वो और है। ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट एक्ट आया था 75 का। नो सर, वो सप्रेशन है, ये 87 में आया था, कुछ साल 2 साल के लिए रहा था, फिर खत्म हो गया था। आगे बढ़े थोड़ा। आपने लाहौर भी जाना है? नहीं, मैं कल चला जाऊँ। आज ही जाएं, आज ही जाऊँ, जैसे आप हुक्म करें। अच्छा सर, अब नाउ आई एम ड्राइंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल which the court was required to follow. It is start from 265. 265A. This is chapter 22A, which was inserted in 1976. Before that, there were commitment proceedings, but this chapter was instituted. Now, sir, it starts with 265A is not so relevant. 265B जो है B और C से शुरू होता है कि सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस in all cases instituted upon police report, copies of the following documents shall be supplied. So this is the first step when accused come to the court. So on the first date of hearing, copies are supplied. For framing of charge. Yes, so that they know, okay, what is the case against us, what is the evidence on the basis of which we are being tried, or prosecution wants us. यही प्रोसीजर हाई कोर्ट ने भी फॉलो करना था 265B में। जी सर, अब आगे आप देखिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है 265D. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर।
if after perusing the police report, or as the case may be, the complaint and all other documents and statement filed by the prosecution, the court is of the opinion, this is very important, the court is of the opinion that there is a ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing a charge. So the court is required, this is shall, court is required to form. इधर नहीं हुआ क्या? मैं सर थोड़ा मैं अभी आ रहा हूँ ना जी उस पे, मैं अभी आप उल्टा कर दें, पहले बताएं नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ, नहीं चार्ज फ्रेम हुआ, मैं अब थोड़ा सा ओपिनियन फॉर्म ने की। ये क्या सर मैं ये कर रहा हूँ कि पहले स्टेप पे आप कॉपियां देंगे मुझसे, वो तो पता है सर नहीं अगली स्टेज का भी है ना, और विद इन 7 days 7 दिन के बाद आप चार्ज फ्रेम करेंगे, उससे पहले आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे, मटेरियल जो आपके पास हो उसको पढ़ेंगे, देखेंगे ये FIR है, ये स्टेटमेंट्स है, ये रिपोर्ट है डॉक्टर की, ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, और हम समझ बकायदा एक ऑर्डर होता है, इन एवरी ट्रायल देयर इज एन ऑर्डर कि I have perused the record and I am of the opinion there are grounds for proceeding. अब इस केस में क्या हुआ? Your Lordship kindly look at page 3 of volume 7. This is the first date of hearing. Volume 7 sir, वो जो पहला बेल ऑर्डर है ना ट्रांसफर का, उसके अगला पेज जो आप कह रहे थे कि शायद इस पिटीशन का ऑर्डर है, डायरेक्ट उन्होंने एविडेंस को समन कर लिया। यस अभी मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ लिया था, आगे भी नहीं, आगे बड़ी बात मजेदार बात है, पेज सर 3 पेज 3 वॉल्यूम 7। अब ये पहला ऑर्डर है 24/9/77, इससे पीछे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि टू बी हर्ड ऑन 24/9/1977, पिछला देख लीजिए पेज जरा, जब ये ट्रांसफर किया तो उन्होंने कहा कि 24 को सुना जाएगा, तो ये फर्स्ट डेट हो गई। अब इसका देखिए, इसमें पैरा 2 में जो है ना सर, पैरा 2 से पहले सर, दिस केस इज adjourned to the 2nd of October 1977 फॉर ट्रायल। अगला कहते हैं एविडेंस भी समन, और उसके बाद कॉपी सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे उस वक्त पूछा था ना कि चार्ज का फ्रेम, सर मैं इसीलिए मेरे साथ सीक्वेंस में मैं आ रहा था ताकि सारी बातें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैटर्ड रिकॉर्ड है, मेरी डिफिकल्टी ये है, और मैं चाहता हूं कि आप सब जो है ना मेरे साथ चलें, आपको पता चल जाए कि है क्या ये, वो थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए आ रही है, नहीं तो मेरे लिए कोई ये ऐसी बात नहीं है। अब आप देखिए इसको, अब ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, mandatory provision of law है that you have to form an opinion. This is the first date of hearing, and first sentence, adjourn for trial and evidence be summoned, और ये उल्टी बात कर दी, and then they supplied the copy. 265D को totally ignore कर दिया गया, और ये mandatory है, you have to form an opinion. Am I clear sir? Clear? Right. अच्छा, बड़े ये लोग पेश हुए थे, एम अनवर साहब पेश हुए हैं। सर एम अनवर जो थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वही मैं कह रहा हूँ, वो कुछ इसमें ये सारे लोग किसकी तरफ से हैं? सर ये आप जो ऊपर हैं, एम अनवर, एजाज हुसैन बिटालवी, एम ए रहमान स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स फॉर द स्टेट, जुल्फकार अली भुट्टो, मियां मोहम्मद, तरफ से कोई वकील नहीं था ही, कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं, अभी आए ही नहीं ना, कोई वकील कहाँ से आएंगे, पहले दिन तो वो पेश हो रहे हैं। अंदर को लिखा हुआ है कि अंदर हुआ है, कुछ साथ खड़े हैं बस, आप गुल पेश हुए। सर बड़ा कुछ हुआ, अभी तो अगर मैं पूरी ये आपको पूरी एविडेंस पढ़ूंगा तो 1 महीना लगेगा, मगर ये मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो शॉकिंग हैं, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ लॉ हैं, और वायलेशन भी नहीं है, वायलेशन से अगली चीज है, ये आपको जो ये लग रहा है जैसे केस का ऑर्डर शीट पढ़ी जा रही है, ये सिविल केस की मैं ऑर्डर शीट पढ़ रहा हूँ, नॉट अ क्रिमिनल केस की, मतलब कुछ लग ऐसे रहा है जैसे कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, जैसे जरा आप देखिए ना वो चार्ज फ्रेम होना, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो अब मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि क्रिमिनल केस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रायल वर्क बड़ा जरूरी है। इसमें जो जजेस थे मालिक साहब आप जानते होंगे, जानता हूं, ट्रायल कोर्ट के थे, कोई भी एक था गुलबाज साहब, बट ही वाज द जूनियर मोस्ट, सेशन से आया जी, बट ही वाज द जूनियर मोस्ट सर,
मलिक साहब कैपिटल पनिशमेंट में तो वकील का होना भी जरूरी है, तो सर वो तो बाद में होना जरूरी है कि जब आप एक्चुअल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अब मगर ये बड़ी मटेरियल डेट है कि आप एक पहली डेट पे बंदे आ रहे हैं, आप ओपिनियन पहले दे रहे हैं, कॉपीज बाद में सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्या फायदा? आपने तो राय पहले बना ली कि केस इज फिक्स। मलिक साहब ये पेज 10 के ऊपर ये जरा से इनसे पूछ लेते ना चार्ज के बारे में। पेज 11 के ऊपर ये 3/10/1977 का ऑर्डर है। पैराग्राफ 5 केस इज एडजेंट टू 11 October 1977 फॉर ट्रायल। विटनेस शैल बी प्रोड्यूस ऑन द डेट फिक्स। 7 days एडजमेंट हैज बीन गिवन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2। जी उसी दिन चार्ज फ्रेम। अब आप 11/10 को देखे तो चार्ज 11/10 को फ्रेम हुआ। जी जी उसी दिन को हुआ है। चार्जेस read and explained to the accused, they pleaded not guilty. Very right, sir. But my respectful submission is that there is a procedure. Procedure you have to follow, which is for the court of session. That procedure says that first you will supply the copy, then you will form the opinion. And how can you form the opinion without perusing the record? You may need assistance of the counsel at that time. Even before filming of charge, before filming of charge, 265H की रोशनी में, it is a conviction by the court of sessions or the high court. ये कन्विक्शन तो सेशन कोर्ट की समझी जाएगी। यही बात है। हाँ तो यही मैं कह रहा हूँ। कंफर्मेशन unless it is confirmed by the high court नहीं होगी, नहीं हो सकती है। यही तो मैं सबमिट कर रहा हूँ सर। This is the first time this point has been raised. First time 374 and credit go to Justice Shah for writing such a beautiful judgment and highlighting the importance. मलिक साहब देखिए ये जो चार्ज फ्रेम करना है, जैसे आपने कहा कि ओपिनियन फॉर्म करने के, सपोज किसी और केस में अगर मटेरियल की बुनियाद पे एविडेंस इतना ना हो कि चार्ज फ्रेम किया जा सके, वेट हो जाएगा। 265 की पावर इस्तेमाल कर। ये वेरी बड़ा जी पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है जस्टिस मंदोखेल साहब ने। अच्छा ये मंदोखेल साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। वो कहते हैं कि अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम करने की पोजीशन अपना आती है स्टेज पे और वो कहते हैं कि द मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट, व्हाट विल हैपन? So that in that situation court has the power to acquit the accused under section 265 के कि जी हमारे पास ये मटेरियल ही नहीं है, हम आपको क्या चार्ज करें? किस पेज पे चार्ज? ये पेज 12 पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया था मिस्टर भुट्टो ने। जी जी पेज 12 पे लिखा हुआ है वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर चार्ज किस पेज पे मिलेगा? सर मिल गया, मैं आई वाज एड्रेसिंग पेज 12 पे आप बता दो। वॉल्यूम 2 पेज 1 जी पेज 12 के ऊपर एक ऑब्जेक्शन ओवर रूल हुआ है विच वॉज रेज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिस्टर। ये कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन था, वो मेंशन नहीं किया। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Where is that charge? पेज कौन सा? पेज पता नहीं, पेज 1 है, वॉल्यूम 2 पेज 1। अब चार्ज भी उन्होंने हर एक का अलग कर दिया, एविडेंस चल गई है, अलग कर दिया चार्ज। पेज कौन से है? ये जॉइंडर ऑफ ट्रायल है ना, उस प्रिंसिपल को भी वायलेट किया कि अगर सारे मुल्ज़म हैं तो चार्ज आप इकट्ठा करेंगे, उन्होंने चार्ज भी अलग कर। ठीक, वो बताओ 49 पेज है इसका। इससे अगला पॉइंट नोट करो जिसके बाद आना है। सबमिशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है द प्रेजुडिस, व्हाट प्रेजुडिस वाज कॉज्ड टू द अक्यूज्ड। तो अगर चार्ज, तो देखें वो आपकी बात ठीक थी कि नोटिस होना चाहिए था, वहां ठीक था। यहाँ पे ये कहना कि चार्ज उनने डिफरेंट कर लिया, उससे इसे चल छोड़ दें, मैं इसको इससे ज्यादा बात नहीं कर रहा। मैं वही कहता हूँ आप उस चीज पे रखें जहाँ पे अक्यूज्ड को प्रेजुडिस। सर मैंने इसको जस्ट पॉइंट आउट किया है, मैंने स्ट्रेस नहीं किया। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैंने इसको ये नहीं कहा कि आप इसकी बुनियाद, मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो शॉकिंग है।
وہ بتا رہا ہوں. تو مینڈیٹری ریکوائرمنٹس کو پوری نہیں کیا وہ بتا رہا ہوں. نہیں وہ تو الٹ کر دیا نا, آپ نے اپنا پریجوڈس شو کر دیا کہ آپ نے پہلے رکھ لیا کہ جی کیس کو ایڈجرن کرو فار ایویڈنس فار ٹرائل. اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں پہلے یہ بیٹھا ہوا ہے, ملزم آیا ہے, نہ اس کا وکیل ہے, نہ آپ کو کاغذ دیکھے ہیں, نہ آپ نے کہیں لکھا ہے. کیونکہ پرابلم یہی ہوتی ہے نا جی کہ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے. کوئی جو اپیلیٹ کورٹ کے ججز ہوتے ہیں دے ڈونٹ ہیو دا ایکسپیرینس آف ٹرائل. زندگی میں کافی چیزیں صرف انسان ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کر سکتا ہے, کتابیں پڑھ کے نہیں کر سکتا. وہ جو ٹرائل کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, جو لائرز ہوتے ہیں, وہ سارے ویل ورسڈ ہوتے ہیں نا کہ یہ سٹیج ہے, یہ سٹیج ہے. اب جو فائل جاتی ہے ہائی کورٹ کی کنفرمیشن میں, وہ جو ریڈر یا علمت بھیجتا ہے اس کو نہیں پتا یہ کیوں, وزڈم کیا ہے اس کے پیچھے. وہ کہتا ہے لکھا بھیجو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کیس. ہائی کورٹ کا کام یہ نہیں ہے. یہ تو ایک پروویژن رکھ دی گئی ہے. انڈیا میں کیوں نہیں ہوا, کیوں نہیں کوئی کیس ٹرانسفر ہوا؟ ہم سے 5 گنا بڑا ہے, کوئی کیس کیوں نہیں ٹرانسفر؟ اب آگے دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کا جواب بریک سے پہلے مل چکا ہے کیا کہ وہ ماشاء اللہ نہیں تھے. اچھا, اب میں جو آرڈر پڑھنے لگا ہوں یہ بڑا بہت ہی یہ بھی ایک پینفل آرڈر ہے کہ کیا اس آرڈر کے بعد چیف جسٹس صاحب کو یہ کیس سننا چاہیے تھا؟ یہ اب آرڈر بڑا انٹرسٹنگ آرڈر ہے کہ جہاں چیف جسٹس صاحب ملزم سے ناراض ہو گئے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ میں ناراض ہوں, یہ لکھ رہے ہیں میں ناراض ہوں. آپ کے ساتھ وکیل کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے اور وہ بات ختم ہو جاتی ہے. مگر اگر آپ پارٹی سے الجھ جائیں یا پارٹی کے خلاف آپ کو پروسیڈنگ کی درخواست دے دیں کسی کو, تو کیا پھر آپ جج رہ سکتے ہیں؟ اس کو باعث کہیں گے, پریجوڈس کہیں گے, کیا کہیں گے؟ اب میں آپ کو پیج 49 اسی والیوم یہی ہے نا. ایک سیکنڈ, آپ آگے جانے سے پہلے ذرا آپ کو ایک سوال پوچھنا تھا. سر حکم کریں. 302 is dependent on the conspiracy, correct? Yes. جی اس کیس میں yes. If conspiracy goes 302 collapses. To the extent of conspirators. To the extent of Mr. Bhutto. Yes. Now please can you come to the first charge? Yes. And just read it. Where are the particulars in this charge? Sir, دیکھیے نا, accused is entitled. This is a case of conspiracy. Now please just read it. یہ ہے جی that you sometimes in the middle of 1974 conspired. ضروری تھا مگر سر میں یہی میں کہہ رہا ہوں نا, کچھ تو انگریڈینٹس دینا in someone's house, in the prime minister house, in whereabouts. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں جناب کا حکم تھا. کنسپیریسی کی کمپوننٹس ڈالیں گے. میں وہ آگے آؤں گا. جناب کا حکم تھا کہ be precise to the point. I was just wondering. نہیں یہ ہے اس طرح تو سر ہر آرڈر میں یہ میں آپ کو بات دکھاؤں گا. پھر تو یہ ان اینڈنگ ہے. یہ تو باتیں میں جان بوجھ کے اگنور کر رہا ہوں کہ میں ان چیزوں پہ جا رہا ہوں جن کا جواب یہاں بیٹھے کسی بندے کے پاس نہیں. میں تو اگر یہ تو باتیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب وہ پڑھیں ریلیونٹ پروویژن, ہاؤ اے چارج ٹو بی فریم, ٹائم, پلیس, سب کچھ آپ نے مینشن کرنا ہے اس میں. 222 سے آگے شروع ہو جائیں. وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. سم ٹائمز کون سا ٹائم تھا, کہاں پہ تھے, کیا تھا. مگر میں کہتا ہوں اس کو اگنور کریں. جیسے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی مسٹر جسٹس کہ جی وہ ٹھیک ہے چارج اگر انہوں نے اس طرح نہیں بھی کیا تو پریجوڈس کو. ویری رائٹ, میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. نہیں بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں صرف اس لیے اس کی اہمیت دیکھ رہا ہوں بیکاز اف دیر آر سم کیسز ویئر یو کین کنوکٹ سیپریٹلی, ٹھیک ہے, بٹ ہیئر مرڈر از ڈیپینڈنٹ آن کنسپیرسی, quite right, which is not generally the case. مرڈر ہو گیا ٹھیک ہے, وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اس کو ختم کریں تو دوسرا آٹومیٹکلی کلیپس ہو جائے گا اگینسٹ دس پرٹیکولر اکیوزڈ. جی بالکل ٹھیک فرما رہے. میں تو ایگری کر رہا ہوں سر اس سے. میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات 100% apt observation, appreciated. اب سر میں پیج جی سر 49 پہ جی 49 سر اب میں پڑھنے لگا ہوں. یہ 2 لائنیں اوپر میں چھوڑ رہا ہوں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سب کے لیے. During the cross examination of witness, یہ سر پیج 49 volume 7, پیج 49 volume 7.
मिल गया सर जी. During the cross-examination of the witness, while describing the purpose for which the first stand gun had already been secured by Ghulam Mustafa, the witness stated that it has been obtained for the use against Chief Justice and has already been used against film actor Muhammad Ali. The witness later corrected by saying that by Chief Justice he meant retired Justice Sayyid Jamil Hussain Rizvi. अब आगे relevant है. The acting Chief Justice, while pointing out to the witness, stated he should have said judge and not Chief Justice. Observe that the turn of Chief Justice had not yet come. At this stage, accused Z. Bhutto remarked from the seat, "Aayega." The acting Chief Justice directed the officer in charge of the police station on escort duty to take note of it and have an entry made at the nearest police station. Ab aage, the acting Chief Justice further remarked, not that he was offended by the remarks, but if anything did happen, somebody would be accountable. तो इसके बाद जज रहना चाहिए. मैं क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आई बात. क्या आएगा? मैं समझा देता हूँ जी. हुआ ये कि एक विटनेस का बयान हुआ, उसने कहा जी कि एक स्टैंड गन मुझे पहले भी मिली थी फॉर यूजिंग इट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस. तो उन्होंने बाद में उसने कहा सर वो मैं चीफ जस्टिस. अगेंस्ट का क्या मतलब? क्या? मारने के लिए? और क्या करना है स्टैंड गन से? I'm lost now. दोबारा पढ़ ले जरा उसकी अंग्रेजी को छोड़ दे सर, सब्सटेंस उसका देखे ना. पहले PW31 दिखा दे हमें. 31 को पढ़ने की सर जरूरत नहीं है, उसका ये एक स्टेटमेंट है. ये समझ नहीं आ रहा ना कॉन्टेक्स्ट ये है जी कि एक विटनेस आया, उस 31 को पढ़ना चाहेंगे फिर उसको पढ़ लेते हैं. नहीं, मेरा मतलब वो कह रहा है कि मैं चीफ जस्टिस को भी कत्ल कर रहा था, मोहम्मद अली को भी ये नहीं कह रहा. ये नहीं कह रहा. वो कह रहा है विटनेस ने कहा कि मुझे स्टैंड गन मैंने पहले ली थी फॉर द चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस. एज अ गार्ड? नो सर नो, फॉर उसको मारने के लिए, और फिल्म एक्ट्रेस मोहम्मद अली. फिर वो कहता है कि जनाब हकीकत ये है कि मैंने कहना था जस्टिस जमील हुसैन रिजवी, तो मैं चीफ जस्टिस कह गया हूँ, इसको करेक्ट करें. तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी चीफ जस्टिस की बारी नहीं आई. तो भुट्टो साहब ने कहा वो भी आएगा. भुट्टो साहब ने जब एक रिमार्क्स आप देते हैं तो आगे से मैंने भी कुछ कह दिया. ये जो गुलाम हुसैन है ये अप्रूवर है या क्या है? नहीं, गुलाम हुसैन वो विटनेस है, अप्रूवर, जो सारे ऑपरेशन को कमांड कर रहा था. तो ना सिर्फ उन्होंने इस कंस्पिरेसी में थे बट एक अर्लियर कंस्पिरेसी में भी थे कि एक्टर मोहम्मद अली और उनका कहना ये था कि हमें ये भी टास्क मिला था. नहीं तो ये तो बहुत क्रेडिबिलिटी टू द विटनेस पे चली जाएगी सर. अब उस पे चले जाएंगे, वो तो दूसरी साइड पे है. अभी पहले मोहम्मद अली का इनसे क्या ताल्लुक हुआ? सर वो एक वाकया बयान कर रहा है ना, अपनी एक्टिविटीज बता रहा है कि हमें ये करने के लिए कहा गया, इसके अलावा भी वजह ये तो उससे पूछी जाएगी. नहीं, कुछ उसके मेन स्टेटमेंट वो बता रहे हैं ना, हाईलाइट कर रहे हैं कि उस दौर में ये काम हो रहे थे, और ये जो जरूरी नहीं कि ये जो अकेला इनके साथ हुआ, दूसरों के साथ भी हो रहा था. नहीं देखिए, फिर सॉरी आई एम बिलीवरिंग द पॉइंट. फिर या तो वो ये जाहिर करना चाहता था अप्रूवर विटनेस कि आई वाज द हिट मैन टू डू वेरियस थिंग्स, हूएवर वुड स्पीक अगेंस्ट दिस जेंटलमैन. ठीक है, तो उन्होंने बात की थी तो उसको भी मारना था. मोहम्मद अली ने बात लॉजिक क्या उसका जो स्टेटमेंट है, उसने कह दिया कि मुझे स्टैंड गन मिली थी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट लगाने के लिए, बजाय जज के नाम चीफ जस्टिस का नाम लेने के लिए लफ्ज चीफ जस्टिस कह दिया. चीफ जस्टिस गॉट ऑफेंडेड. वो तो मैं समझ गया. भुट्टो साहब ने भी कह दिया आएगा, मगर मैं दूसरा पहलू, वो तो बात समझ गया. एंड पे वो कह रहा है कि अगर ये होगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं आपको अकाउंटेबल ठहरा. और दूसरा कहता है मैं ऑफेंडेड हूँ, और अगर हुआ तो मैं आपको अकाउंटेबल ठहरा. अब मेरा पॉइंट ये है कि क्या इस सिचुएशन में जब जज का मुल्जम के साथ पर्सनल ग्रज हो जाए और जज उसको चाहे कि सजा मिलनी चाहिए, तो क्या वो जज रहेगा? ये है मेरा पॉइंट. इसमें एक और पहलू भी है. अगर आप पेज 50 पे आ जाएं, रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. अगर आप पेज 50 पे देखें, साइन सब कर रहे हैं, सारे ही कर रहे हैं. नहीं, अगर ऊपर देखिए, द एक्टिंग चीफ जस्टिस डायरेक्टेड, he doesn't say the court directed.
یہ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی یہ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ بات. پتہ نہیں اب یہ بھی میں تو مطلب if it's a collective court then you write unless there's a dissent or something. صاحب اس کو تھوڑا الاؤنس دیجئے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں انگریزی میں ان کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب وہ تو چلے اس کو اتنا امپورٹنٹ. PW کون سا نمبر تھا؟ 31. آپ کنسرن کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کی 30 انگریزی بہتر ہے؟ 31. اچھا چلے اب پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سر. پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ باعث دکھا رہے ہیں. یہ باعث ہے غصہ کر گیا اس جو آپس میں ان کی یہ ہر آپ اس کو ایکیوز بنا رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے خلاف پرچہ کروانا. یہ ہے اس کا مطلب. یعنی کمپلیننٹ بن گئے. کمپلیننٹ بن گئے نئے کیس کے لیے. جج یہ کمپلیننٹ بن جائے تو کیا پھر اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اس ٹرائل میں؟ کوشچن یہ ہے. اور کیا باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا جنہوں نے آرڈر سائن کیا؟ یہ پوائنٹ ہے. یہ جو باعث میلس ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس کا نام سے رپورٹ درج کراؤ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اس کا مطلب میں دنیا میں نہ رہا تو پھر اس کو پکڑ لینا. یہ 107 اور 151 کی کارروائی کرنا چاہتا ہے. وہ اور چیز ہوتی ہے اس میں دونوں کٹھے کہا کہ اپریہنشن کر دی کہ یہ مجھے مروا دے گا. میرے کو انیمیکل ہو گیا نا. تو سر آپ کا اس کا مطلب ہے جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ سزا ملے، میری خواہش ہے اس کو سزا ملے کسی اور کیس میں، تو اگر آپ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کی فیٹ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے ملک صاحب کہ جو اگر ملزم نے کوئی بات کر بھی دی وہ تو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے اس آرڈر میں، یا تو پھر اس کو پھر بیان کے لیے بلائیں. نہیں پہلے تو آپ نے کہا نا یہ سٹارٹ چیف صاحب نے لیا، ٹانٹ انہوں نے کی کہ ابھی اس کی باری نہیں آئی. یہ وہ کس کو سنا رہے تھے؟ یہ بات وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہاں کون تھا جو باری لا رہا تھا؟ یہ باری تو ان کو کہہ رہے ہیں نا. تو اب جیسے آپ مجھے کچھ کہیں تو میں آگے سے کہہ دوں تو آپ کہیں ہاں جی آپ نے تو کنٹیمپٹ کر لیا، بس ٹھیک ہے، ہم نے جو کہا وہ چھوڑ دیں. آپ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیف کی باری نہیں آئی. What do you mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں. وہ آگے سے اس نے کہا آئے گا، اب کہہ دیا ہوگا. اب اس کے اوپر پورا آرڈر لکھوانا کہ اسکارٹ والے کو کہو کہ تھانے جاؤ، رپورٹ درج کراؤ، تاکہ آگے کوالیفائی کر رہے ہیں کہ کل کو. ملک صاحب ہوا کہ ویسی آرڈر کر دیا تھا کیا جی؟ یہ رپورٹ کر دی تھی جج صاحب نے جی. وہ آرڈر میں لکھی ہے چیف جسٹس آپ ابھی آرڈر پاس کریں کہ بھی ان کو لے جاؤں تو یہ تو لے جائیں گے مجھے. یہ پوچھنے اس میں کوئی دوسرا تو رائے نہیں ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں. تو میری وجہ سے کبھی نہیں ہوتا ایسی بات. نہیں چلے میں تو ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں. ابھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہے، آپ تو خود چیف جسٹس رہی ہیں. اب وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ کاروائی کرو. Who will dare? And in that time, at that time when there is a marshal, has not been brought on the record کہ واقعی ہو گیا تھا. نہیں وہ تو obviously ہو گیا ہوگا. وہ اس کی جرت ہے، وہ جو بیچارہ سب انسپیکٹر ہے کہ وہ کمپلائی نہ کرے. آپ اس میں بات نوٹ کریں نا کہ کتنا پرسنل میرے اندر وینم ہے. آگے بڑھتے ہو یا نہ ہو لیکن آرڈر سے پرسنل گرج سامنے نظر آ رہی، ثابت ہے، اسٹیبلش ہے، نظر نہیں آ رہا، اسٹیبلش ہو گیا. اس کو آفس اینگل سے بھی دے سکتے ہیں ملک صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا تو بالکل پرچہ. تو یہ اس پہ بن سکتے تھے کیس 100%. چلے پہلے ہو گئی لیکن افسوس یہ کہ پائلٹ کہتے ہیں 5 سے پہلے ہو گئے موقع. آگے کیا؟ اچھا سر اب میں اگر اسٹیج پہ آپ کو وہ ٹریبیونل کی بات بتا دوں جس میں وہ قصوری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ٹریبیونل نے ریفر کیا ہے. یہ so I am not addressing you please. نہیں آپ ہمیں بتائیں نا، آپ کورٹ سے بات کیجئے. میں ریکارڈ آپ ہم سے بات کریں. قصوریت تحمل رکھیے. I have nothing personal against you قصوری صاحب. You are respectable for me. I am referring the record. I don't say ہمیں مخالف سر مگر اچھا نہیں لگتا. نہیں اب کیا کریں، بزرگ ہیں ہم ان کو منع کر رہے ہیں. پہلے یہ بتا دیں ٹریبیونل بنا کیسے اور کیا ہوا. سر اب میں پہلے ایک طرف سے فارغ ہو جاؤں تو پھر بتا دیتا ہوں. یہ ٹریبیونل سر اس طرح بنا کہ گورنمنٹ نے ایک ٹریبیونل بنایا. انڈر
the Tribunal of Inquiries Ordinance 1969 के तहत 1 man tribunal था, ये notified हुआ in Gazette of Punjab on 11th of December 1974. इसकी जो रिपोर्ट आई उसकी कॉपी हमें मिली है, उसकी प्रोसीडिंग हमें नहीं मिली। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इसके पीछे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हैं उसके, अगर वो कहते हैं मैं वो भी पढ़ देता हूं। वो मैंने पढ़ ली है, पूरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसका पेज कौन सा है? 14 पे जिसमें ये लिखा है, ये है पेज 14 है इसका। वो कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं सर, एक ही इतनी सी रिपोर्ट है, क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि दे मे बी अदर persons who may be involved, कुछ उनके आपस में कुछ चल रहे थे। नहीं, ये और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज है। आप वो रिपोर्ट अगर देख लें जरा। मैंने देखी हुई, क्या पॉइंट क्या बता रहे हैं? सर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर इजाजत दे। इसको पढ़ लेना। जी जी पढ़ें जी प्लीज, मैं पढ़ देता हूँ, चलें आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। कौन से ये सर पेज 14 पैरा 15 कॉपी भी है, कॉपी है या नहीं हमारे पास? और ये ट्राइब्यूनल ने अपनी फाइंडिंग किस तारीख को ये कंप्लीट की है उसने? है किसमें? मैं सर बताता हूँ, ये है ओरिजिनल तो हमारे पास है, पता नहीं कॉपीज बनी है या नहीं। कौन सा? आप ऐसा करें, आप पढ़ लें, हमारे पास ओरिजिनल है, हम कॉपीज कर लेंगे बाद में। आप पेज 22 फरवरी 1975 पेज पेंसिल से लिखा हुआ है सर जी, वही टाइप पेज है ना जी, ये 14 है, टाइप पेज 14 उसके नीचे पार्ट 2 लिखा हुआ है, रिपोर्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल। नहीं, इसमें तो हमारे पास नहीं है जी। पैराग्राफ कौन सा है? पैराग्राफ 15 सर। ये जो अब ये देखें, ओनली मोटिव वाला इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई और आपने एक ट्राइब्यूनल बना दिया, तो इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन को रोका तो नहीं ना ट्राइब्यूनल ने जी, उसने तो आगे जाके उनको गाइडेंस दी है कि इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन। एडिशनल फैक्ट फाइंडिंग मशीन है। हाँ, उसके इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। Why should there be a tribunal? वो मैं उस पे तो सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसमें जो कि इस केस के लिए बड़ी जरूरी है, वो आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये वो गलत। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर, नॉट बाय दीज ट्राइब्यूनल। बिल्कुल, आई एम विद यू सर, कि कहीं जरूरत नहीं है क्रिमिनल इंसिडेंट में ट्राइब्यूनल बनाने की। वो तो एलिगेशन है, उसकी एविडेंस कलेक्ट करें, बिल्कुल ठीक, मगर एक सर्कमस्टांस आ गया ना उसमें, मैं तो वो रेफर करना चाह रहा हूँ कि अब वो एक चीज आपने खुद ही एक ऑर्डर। आई थिंक अगर हम उसका सिनारियो देखें, एट दैट पॉइंट इन टाइम Mr. Bhutto was a prime minister and allegations were being made, so probably to raise the stakes or whatever you want to call it, a judge of the High Court was constituted as a tribunal कि कहीं ये देखें पुलिस तो नहीं करेगी सही इन्वेस्टिगेशन, तो शायद ये वजह हो सकती है और मेरे ख्याल में यही वजह होगी। मलिक साहब, इस तरह के ट्राइब्यूनल बने जब आप इशू को पार करना चाहें तो फिर ऐसे ट्राइब्यूनल होते हैं, सच दोनों तरफ जाती है ना बात, बट द पॉइंट ऑफ माय लॉर्ड यहिया अफरीदी इज वेरी रेलेवेंट बिकॉज इन क्रिमिनल केस इट इज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन। मगर बन गया ना, मैं तो इसलिए रेफर कर रहा हूँ ना। जी जी बताएं फिर। पढ़ेगा इन explaining the mention of motive in the FIR, अब ये आगे बड़ा जरूरी है। The complainant made it clear, and who is the complainant? Made it clear that it does not necessarily mean that he was subjected to this and at the precedent attack directly at the bidding of the Prime Minister, or that the attack was organized by someone in government or party. He said, on political differences, whatever their nature or extent, such a public condemnation by the Prime Minister, who happened to be, for the time being, the repository and source of all political and governmental power, could prompt a die-hard and over-enthusiastic person or a trigger-happy individual in the government or outside of the party or not to accomplish his extermination from the scene.
अब ये वो जो बात है कि वो उनका नाम आया तो क्या वही थे, अब वो ट्रिब्यूनल रेफर कर रहा है उनकी स्टेटमेंट को, दिस इज हिज केस, ही डिड नॉट अपीयर, आई डोंट नो वेदर ही अपीयर और नॉट, बट दिस इज इन द रिपोर्ट। वो कह रहे हैं कि इन्होंने कहा, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट बताई है कि उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि वो हों, कोई उनकी बातें सुन के शायद किसी और ने भी कर दिया हो, ये मैं पढ़ना चाहता। ठीक। अच्छा ये हो गया। अब क्या नहीं, अभी ये जो ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट है ये 75 की बेटा अभी नहीं। जी सर, ट्राइब्यूनल की जो रिपोर्ट है, हाँ, इसमें कुछ डायरेक्शंस दिए थे, ये दिए थे, उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ? अब पता नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है, अब उसका मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था ये लाइनों पे करो, अब ये तो जिन्होंने चालान देना था, रिपोर्ट देनी थी, विटनेसेस देने थे, उनका काम था ना। ये ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट हुई? हाँ, वहाँ आई ये। तो इनके बयान से कन्फ्रंट नहीं करवाएंगे? नहीं, वो उन्होंने इजाजत नहीं दी, क्योंकि बयान तो पता नहीं आया। बहरहाल वो तो बड़ी सर लंबी, अभी मैं तो सिर्फ एक गवाह को टच करूंगा, मैं आपका टाइम बचाऊंगा। देयर आर 41 विटनेसेस, मैं नहीं चाहता फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। 41 की नहीं, सिर्फ कंप्लेनेंट के चूंकि स्टेटमेंट आ गया, वो कन्फ्रंट होना चाहिए था सर, वो आना चाहिए था, वहां कन्फ्रंटेशन को परमिट ही नहीं किया गया। उन्होंने, अब आप देखेंगे वहां पे वो, अब इतनी बातें हैं ना जी, इतना ज्यादा है मटेरियल कि वो टाइम का इशू आ रहा है आपके पास। अब 41 विटनेसेस है, मैं सिर्फ एक गवाह को फोकस करूंगा, बाकी आई विल नॉट गो टू अदर एविडेंस। सो अब सब हम आ जाएं इस पे। एविडेंस ऑफ मसूद महमूद, PW, ही इज PW2। मसूद महमूद PW2 सर। कौन सा वॉल्यूम है? अभी मैं उसको पढ़ नहीं रहा जी, मैं अभी जरा थोड़ा सा वॉल्यूम नोट कर। वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 है इसका। जरा स्टोरी अधूरी रह जाएगी, ये रिपोर्ट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है, because my colleagues don't have the benefit of this report. ये वाला डायरेक्शन वाला 36। हाँ, in short, the direction that I propose giving to the investigating agency are the following: a more thorough and expert examination of the spot, preservation of property connected with the crime already recovered or recoverable from the spot, expert examination of all the recovered article together with a view to narrow down the class of weapon used in the commission of the crime, natural witnesses to the occurrence, that is resident of the area, invitees at the house of Bashir Shah, the patrol parties to be subjected to more purposive interrogation, particularly for ascertaining the number of shot fired, number of weapons used, and the suspect. And the surviving occupant of the car should have been positively interrogated on certain aspect of the investigation, the material witnesses in the case, and the suspect to be fully protected against physical harm. मैं पूछना चाहूँ, जो 41 विटनेसेस थे, कार के ऑक्यूपेंट्स थे? कार के ऑक्यूपेंट में स्वाय कसूरी साहब के बाकी कोई भी विटनेस बॉक्स में नहीं आया। अच्छा, ये दूसरे जो थे इनवाइटीज एट द हाउस ऑफ बशीर शाह? नो। अच्छा, the other thing was the how many shots were fired at the car? Nobody knows, sir. नहीं, कार में उन्होंने कहा छन्नी हो गई। काफी उनसे एम्प्टीज ली थी उन्होंने स्पॉट से। नो, आमतौर पे तो केस प्रॉपर्टी बन जाती है। वो बनी ना, ये एम्प्टीज बनी केस प्रॉपर्टी। कार नहीं, कार को तो उसमें कितने, जैसे उन्होंने कहा ना कि there was one entry, अगले दिन इन्होंने स्पुर्दारी पे ले लिया। नहीं, उसमें कितने निशान थे? अब ये तो उन्होंने नंबर ऑफ रिकॉर्ड में कुछ आया कि वो जो जिसने उसको एग्जामिन किया था उसकी फोटोग्राफ ली थी, वो बात आई। बट सर नहीं, मतलब मेरा तो वन शॉट है या मौत? नहीं, काफी है। वो सब शायद आप बता चुके हो, शायद मैंने मिस किया हो। एक कंप्लेंट आई है कंप्लेनेंट की तरफ से, तो फिर जो वो एट द टाइम एंड द अकरेंस टुक प्लेस, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रुख मुड़ गया मिस्टर भुट्टो की तरफ। उस दौरान क्या इनकी कोई स्टेटमेंट आ गई चार्जिंग मिस्टर भुट्टो फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर? कहाँ, कंप्लेंट में या इस केस में? नहीं, इस केस में कंप्लेनेंट की फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई
اور وہ انویسٹیگیشن کا رخ جو تھا وہ مسٹر بھٹو کی طرف مڑ گیا. یہ 77 کی بات کر رہے ہیں. جی, تو اس دوران ان کی کوئی ہاں آئی ہے, ان کا تو کورٹ میں بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کورٹ سے پہلے نہیں, کورٹ سے پہلے انویسٹیگیشن میں ڈیفینیٹ آئی ہو. وہ کمپلینٹ فائل کی وہ بتا رہے ہیں, وہ کمپلینٹ فائل کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کو نہیں, وہ میرے علم میں اس پہ ایف آئی آر میں تو نہیں ہے نا, ذکر تو ہے بھٹو کو. ان کا کیس کورٹ میں بھی یہی ہے کہ یہ انہوں نے پورا نریٹ کیا ہے کس طرح میں نے پارٹی جوائن کی, کس طرح میں نے مخالفت کی, کیا کیا گراؤنڈ تھی میری مخالفت کی. میں ان کے فیصلے کے خلاف ایسٹ پاکستان اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے چلا گیا. اگر واپس میں پھر واپس بھی پیپلز پارٹی چلے گئے, بڑا کچھ باتیں ہیں. بالکل چلے گئے, بالکل چلے گئے. انہوں نے ٹکٹ مانگا 77 میں پیپلز پارٹی کا, ٹکٹ ڈینائیڈ ہوا. انہوں نے باہر کے ملکوں میں گئے, وہاں باتیں کی, وہاں بھٹو صاحب کی تعریف کی. یہ ریکارڈ کی باتیں آپ کہتے ہیں, پڑھ دیتے. کرمنل کمپلینٹ نے کس تاریخ کو فائل کی؟ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے یہاں پہ. وہ جو آرڈر آپ نے پڑھا اس میں لکھا ہے اگست میں شاید کی ہے. آف وچ ایئر؟ 77, جب ماشاء اللہ لگ گیا. وہ تو پھر آپ ان کا, میری سبمیشن یہ ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کے لیے ان کا سٹیٹمنٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اسٹیٹ زیادہ انٹرسٹڈ لگ رہا تھا, نہیں کمپلیننٹ سے زیادہ. چلیں جیسے ان کا سٹیٹمنٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, میں اس کو ٹچ ہی نہیں کرتا, میں اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتا. چلیے آگے چلیں, کیونکہ وہ بڑا لمبا ہے. وہ جو باتیں موٹی موٹی آپ نے پوچھی ہیں کہ ہی ری جوائن دا پارٹی, ہی اپلائڈ فار دا ٹکٹ, ہی ہیز ایڈمیٹڈ دس فیکٹ, he admitted this fact in cross examination, that's applied, but he said this was my strategy because I had a fear and so I wanted to protect myself. یہ ان کی explanation ہے, but یہ fact admitted. but میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں جو سبمٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ there was only one witness against Bhutto, one witness, and that is Masood Mahmood. If your lordship accept his testimony, if your lordship comes to the conclusion that he is speaking the truth, his evidence inspires confidence, it is natural or probable, then that remaining evidence may be considered as supporting or corroborating. Then consider. But if your lordship comes to the conclusion that this evidence of the witness is not reliable, it does not connect Bhutto, it does not inspire confidence in the mind of a prudent man, then there is no need of going further. Then to the extent of Bhutto, the case is over, because no other witness has charged Bhutto. You are taking us now to the testimony of Masood Mahmood. Yes, sir. I was taking you to the testimony. اب میں یہ دینا بھی اس کی ٹیسٹیمنی دے دوں, پیج کون سا ہے. اب میں اس کے بڑے ہی تھوڑے پورشن پڑھوں گا تاکہ جناب کا ٹائم بچ جائے, کیونکہ یہ جو کراس ایگزامن چیف ہے. اور پھر پہلے دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹلی آئی ول کنفائن مائی سیلف ٹو دا ایگزامینیشن آف چیف اونلی. I will not touch the cross examination. And PW2, sir. Masood Mahmood, PW2 is examination chief consists of around 17-18 pages, but I will read just 10 pages. And thereafter I will make page volume 2 page and thereafter 64. Thereafter, sir. And thereafter I will, after reading this, after reading the examination chief, thereafter I will make the submission and I will show that if this evidence, this statement is accepted that there was no cross examination on behalf of Bhutto, even then this cannot be trusted. That is کون سا پیج چلیں؟ Page 64. Malik sahab, he was also executed. نہیں, he was a prover, madam, he was a prover. Prover بھی تو اس میں execute ہوئے. نہیں, اپروور کو تو معافی ملتی ہے تو وہ بیان دیتا ہے نا جی, اس کو تو بعض execute ہوئے ہیں اپروور. نہیں, اس کیس میں تو کوئی اپروور ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. اپروور کین ناٹ بی ایگزیکیوٹڈ میم, بیکاز یو ہیو ٹو گرانٹ ہم پارڈن. تو بڑا میجر. ہاں, چونکہ لا کو اپلائی نہیں کیا تو اس لیے میں نے پوچھا. بعد میں ان کو بھی کر دیتے, کام نکالنے کے بعد ان کو بھی کر دیتے. نہیں, وہ بڑا کلیور تھا, اس نے دونوں طرف کھیلا ہے. ویری کلیور مین ہی. یہ میں کچھ ذاتی رائے نہیں دے رہا, میں تو ان کو دیکھا بھی نہیں.
जो इमर्ज हो रहा है इस एविडेंस से, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेज बताए, करूँ शुरू सर? पेज 64 PW2 Masood Mahmood, son of late Abdul Ghani, 54 years of age, formerly Director General FSF on SA. SA is solemn affirmation. At that time, the statements were not recorded on oath. It was on... पता है हमें। मुझे नहीं पता सर। I joined the police service. ये स्किप करें क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सारी चीज है, ये स्किप नहीं होगा। अच्छा, ये हो आपने चलें फिर पढ़ी मैं आपको पहले बता ना मैं आपको बता देता हूँ मैं चाहता क्या हूँ। इस सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ के आपसे 3 चीजें मैं कहूँगा। एक के भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई इस स्टेटमेंट से, मसूद महमूद की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई, और टास्क क्या था मसूद महमूद को लगाने का। तो फिर मैं कहूँगा कि क्या इसकी सीवी जो है उसको देख के इसको ये टास्क असाइन हो सकता है? प्रूडेंट मैन मानेगा। आप ड्राइवर रखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि इज अ गुड ड्राइवर, यही है ना। अब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप उसको ड्राइवर तो नहीं रखेंगे। ये इसलिए बड़ा जरूरी है ये स्किप, ये इसको मैं पढ़ूंगा। I joined the police service of Pakistan in September 1948 after completing my training at the Police Training College in East Pakistan. I served in various capacities in the province. The last post that I held in East Pakistan was Additional Superintendent of Police, West. I served as Superintendent of Police and later as Deputy Inspector General. In 1965, I was selected as Deputy Secretary Central with headquarters at Ankara. Before that, I had served as a Deputy Secretary both in the provincial and central government, beside holding some other posts. I returned to Pakistan in September 1970 at my own request. On my return, I was asked to wait for post. After some time, I was posted as Deputy Secretary, Ministry of Defence, and later promoted as Joint Secretary and Additional Secretary in the same ministry. I may mention that despite my best efforts, I failed to see Mr. Waqar Ahmed, the Establishment Secretary, during those days. I was promoted as Additional Secretary and then transferred to a punishment post, that is Managing Director, Board of Trustee of the Group Insurance and Benevolent Funds in the Establishment Division. I may mention here that I had already been superseded by 4 juniors. I was asked by Mr. Waqar Ahmed to call on the then Prime Minister in the morning of 12th of April 1974. I was told that I had to call on Mr. Waqar Ahmed before this interview. Mr. Waqar Ahmed was very good to me at that meeting, and he informed me that the Prime Minister was going to offer an appointment to me which I must accept. आगे उनका objection है, मैं उसको छोड़ देता हूँ. Mr. Waqar Ahmed's name is not mentioned. He drew my attention to the state of affairs of myself and my wife, to the fact that I had small children, and to rule which provides for recruitment at the time of officer of grade 21 and above. The impression that I carried on my mind was that my job was at the mercy of the Prime Minister and Mr. Waqar Ahmed. I then had my first interview with the Prime Minister after he had assumed the office. At this interview, the Prime Minister said kind word to me, reminiscences about our past associations, praised my, ये बड़ी ज़रूरी है, praised my integrity and capacity to hard work, and offered me the appointment of Director General of FSF. I was directed by the then Prime Minister not to accept instruction from then Minister for Interior, Mr. Abdul Qayyum Khan. I was advised by him against the termination of services of the re-employed officer without taking his prior permission. He told me that they were useful officers. Mia Muhammad Abbas was particularly mentioned. The Prime Minister asked to be on the right side of Mr. Waqar Ahmed. He particularly mentioned about the state of health of my wife, my children, and the fact that I had young children. The then Prime Minister told me that I need my job and I was expected to raise the force into Deterrent 1.
The Prime Minister told me that Mr. Waqar Ahmed did not like me, and it was in this context that he had asked me to be on his right side. The Prime Minister spelled out what he meant by making the force a deterrent one by telling me that he wanted the people of Pakistan, his minister, MNAs and MPAs to fear it. The Prime Minister told me that a written directive has been issued to the force for setting up of an intelligence wing. उसके बाद मैं skip करके सर next page के पैरा आ रहा हूँ, I assume charge. ये मैं skip कर रहा हूँ. I assumed charge of the post of Director General of FSF on 23rd of April 1974. The duties of the incumbent of the post which I had accepted are contained in the Federal Security Force Act 1973. This was besides the charter given to me orally by the Prime Minister. The Prime Minister wanted the force to be available to him for political purposes. On an objection, ये भी मैं छोड़ता हूँ. अब नीचे आ गया. In the ये किस लिए बनाई गई? Number A, breaking up of political meetings, harassment of personage from both in his own party and opposition, induction of plainclothes person in public meeting addressed by him to swell the crowd. By plainclothes men, I meant those who were enrolled in the FSF. I had been giving direction to be present at all the places where the Prime Minister toured. I was also given direction to be present in the National Assembly chamber if the Prime Minister was attending the session or if he was in its own chamber in the National Assembly. उसके बाद मैं skip कर रहा हूँ. Next page पे पैरा शुरू हो गया. In June 1974, when Mr. Ahmed Raza Kasuri was speaking in the National Assembly, Mr. Zulfikar Ali Bhutto addressed him directly and not through the speaker as follows. He asked him to keep quiet and he had enough of him and that he would not tolerate his nuisance anymore. This is more or less what the Prime Minister said. A day or two later, I was sent for by the Prime Minister. He inter alia said to me that he was fed up with the obnoxious behavior of Mr. Ahmed Raza Kasuri and that Mia Muhammad Abbas, an officer of the FSF, knew all about his activity. This officer is an accused in this case. The then Prime Minister further told me that this officer has already been given direction through my predecessor to get rid of Ahmed Raza Kasuri. ये अब वो कंस्पिरेसी पहले से ही है. इस ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है मियां अब्बास को, पहला जो इनका प्रीडिसेसर है. The Prime Minister went on to instruct me that I should ask. The Prime Minister further told me that this officer mean Mian Abbas, वो जो ऊपर नाम आया ना, already been given directions. अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप ये इसको नोट कर लेंगे कि इसको डायरेक्शन हो गई है. Wasn't the direction to Muhammad Abbas in itself sufficient? सर मैं इसी पे आगे बात करूंगा. मैं सारा पढ़ लूं थोड़ा ताकि इसमें बहुत इंटरेस्ट की बातें हैं. मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं चीफ पे बहुत कम जाऊंगा, सिर्फ 2-3 उसके पैरे पढ़ूंगा. मैं इससे ही आपको परसुएट करने की कोशिश करूंगा कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है. दिस इज माई टास्क. To get rid of Mr. Ahmed Raza Kasuri, the Prime Minister went on to instruct me that I should ask Mia Muhammad Abbas to get on with the job and to produce the dead body of Mr. Ahmed Raza Kasuri or his body bandaged all over. He said to me that he would hold me personally responsible for the execution of this order. I was, ये बड़ा important है. I was naturally shaken to hearing these orders and pleaded with him that execution of these orders would be against my conscience and would certainly be against the dictates of God. यहाँ मैं pause करता हूँ. Where is the conspiracy? Where is the conspiracy? If we accept that this was said to this witness by the then Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, and he says, sir, no, this is against not only my conscience but against the dictates of God. Now if your lordship look at the definition of conspiracy in section 120A, so does it fall under that, sir?
میں تو چاہتا تھا کہ میں ذرا ڈیٹیل پڑھ کے اس پہ بات کروں، مگر ابھی اگر آپ اس کو دیکھ لیں، میں دیکھ ہی رہا تھا، کیا میں کیا کروں؟ ملٹی ٹاسک. اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک اس کو بتا رہے ہیں، انفارم کرنا ہے کہ یہ میں طے کر چکا ہوں. اور وہ آگے میں بتاؤں گا نا کہ اگر اس کو بتانا ہی مقصود تھا کہ کام کر دو تو پھر اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کنسپریسی کی بیسک چیز تو سیکریسی ہے کہ میں ایک بات دوسرے کو نہیں بتانا چاہتا. یہ بتائیں، یہ جو اپنے میاں محمد عباس صاحب تھے، ان نے کنفیشن کیا تھا؟ کنفیشن کیا، ریٹریکٹ کیا. ان نے جو کنفیشن کیا تھا اس میں ان نے کیا فرمایا؟ اس میں نے یہی فرمایا کہ جی ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ سازش ہوئی تھی، مجھے اس نے بھی کہا تھا. اس نے کہا تھا؟ مسعود محمود نے بھی کہا تھا، پہلے نے بھی کہا تھا، پہلے بھی نہیں کہا تھا، مگر وہ ریٹریکٹ کر گیا. اس کا کنفیشن ہائی کورٹ نے بھی یوز نہیں کیا اگینسٹ بھٹو، سپریم کورٹ نے بھی نہیں کیا. سپریم کورٹ میں پھر اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ نہیں جی وہ میں ریٹریکٹ غلط کیا تھا، میں صحیح کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے. دس آئی ایم ریفرنگ فرام میجورٹی ججمنٹ. His statement was not considered. My question is, I am stopping here. Just what was my purpose to involve this man? اب آگے پڑھیں گے تو اور باتیں آئیں گی. Just to convey this message to that Ghulam Abbas, Mia Abbas. So it could be conveyed to somebody else. It could directly be called by the Prime Minister. تو بھی کیا کیا؟ اب آگے دیکھیں گے تو اور باتیں آئیں گی. پڑھوں سر فردر آگے جی. The Prime Minister lost his temper and shouted, saying that he would have no nonsense from me or from Mia Muhammad Abbas. Then he raised his voice and said to me, "You don't want Bakar chasing you again, do you?" I returned to my office in that perplexed state of mind. اب یہ بڑا important ہے کہ the man is ordered or asked something by the Prime Minister. He has not said yes sir. حکم کی تعمیل ہوگی جو ہمارے سبارڈینیٹ آفیسر ایون جوڈیشری میں ہر جگہ کرتے ہیں. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا no sir, I can't do this. This is against my conscience, and not only conscience, this is against the dictates of God. And then he says, in this perplexed state of mind, he came to his office, he called me Abbas and narrated that order verbatim. He didn't say that I asked him to do this. یہ وقار احمد کون تھے؟ وقار احمد اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری تھے but he is not witness in this case. He wasn't produced. No. تو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں behind his back. پتہ نہیں جی، سارے ہی کرتے ہیں behind back پہ ہی تو باتیں ہوتی ہیں، فرنٹ پہ تو بہت نہیں. یہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے ٹیسٹمنی. ہاں یہ صحیح ہے بات. نہیں بھائی، if he is attributing things and you should have been summoned. میں پھر ریپیٹڈلی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میں تو ٹائم کانشیس ہوں. اتنا انٹرسٹنگ یہ اسٹیٹمنٹ ہے، اتنے انٹرسٹنگ اس میں پوائنٹ ہیں، نہ کہ فیکٹس کے بلکہ لا کے. میں تو چاہتا ہوں سنیں اس کو. یہ ابھی تو میں ادھر رکا ہوں نا کہ صرف اس سے ہی دیکھ لیں کہ کیا اس کی ضرورت تھی بلانے کی. اب آگے بڑی مزیدار باتیں آئیں گی. ابھی آپ اس کو دیکھیے. بڑا یہ اب ایک سٹیج پہ یہ بالکل مومن بنے گا. یہ کہے گا کہ I have unflinching faith in God. اب unflinching faith جس بندے کا اللہ کے پاس اللہ میں ہے تو کیا وہ بدلتا رہتا ہے؟ جی 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 ٹھیک. کنٹینیو کروں؟ جی 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 جی. اچھا. Whenever you're tired, we'll stop. Sir, it all depends on you. ابھی میرا اس میں ڈیڑھ نہیں آپ چلیں. آپ کا کتنا ٹائم ہو؟ سر ابھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ اور لگے گا، زیادہ لگ جائے گا. تو اس میں کیونکہ بڑی سر یہ بڑا امپورٹنٹ وٹنس ہے. آپ بتائیں. 1.5 گھنٹہ لگ گا. کنٹینیو. ہاں ٹائم لگے گا سر اس میں. گھنٹہ لان کے موقع جو. اچھا ٹھیک. جی چلیں تھوڑا ایک کی وٹنس تو ختم کریں. یہ تو نہیں ختم ہونی سر. اس کا چیز ختم ہو جائے گا. چلیں چیز ختم ہو جاتا ہے. اگر گھنٹہ آپ کہہ رہے ہیں تو میرے ساتھ 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے کے پورا اس کو ایگزامن کرنا ہے. دیکھیں I know it's very difficult to predict time, but let's make some progress. ابھی تو ٹائم ہے تھوڑا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس کو پڑھ لیتے ہیں، چیز پڑھ لیتے ہیں پھر بات کریں. چیز پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ پھر باقی باتیں بڑی لمبی ہیں، اس کے لیے ٹائم چاہیے.
ये सर अब आगे आ गया मियां अब्बास I repeated to him the orders of then Prime Minister verbatim. He is repeating the order. He is repeating the order. He is not giving him a direction. मैं कह रहा हूं कि मुझे फलां ने ये कहा है. ये पहले प्राइम मिनिस्टर मियां अब्बास को कहते हैं कत्ल करो, फिर इसको बुला के कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कहते हैं. मैं बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर को बता रहे हैं सर. नहीं क्या मतलब है सर? अब मुझे तो मतलब नहीं पता, ये तो केस है आपके सामने. मैं तो इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ. ये कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, मुझे उन्होंने फरमाया कि ये आई वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर कसूरी, अल्लाह उनको जिंदगी दे. ये वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा, और ये टास्क ऑलरेडी हैज बीन असाइंड टू मियां मोहम्मद अब्बास थ्रू योर प्रीडिसेसर. ये वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है. अब उन्होंने इसको कहा कि उसको कहो कि इस काम को करे. आगे से ये फरमाते हैं कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे कॉन्शियस के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तो मैं नहीं कर सकता. तो प्राइम मिनिस्टर अपना टेम्पर लूज करते हैं और इसको कहते हैं कि डू यू वांट टू दैट यू वकास कीप ऑन चेजिंग यू. अब वकार के साथ इनका क्या मसला है वो कुछ नहीं पता. ये कहते हैं मैं उसी परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में अपने दफ्तर आया हूँ, उसको मैंने बुलाया, मैंने वर्बैटम रिपीट कर दी एंड That's all. अपने तौर से कुछ नहीं कहा. वो तो आगे आएगा ना, जो पूछा हुआ है वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अभी तो इसको आज पढ़ लेते हैं ना जी, बाकी फिर देख लेंगे. वो कहता है मेरा एक जो देखें ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे. सर नहीं, बहुत फायदा सर, प्लीज. मैं देखिए मैं पता नहीं मगर मुझे देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट. नहीं मैं आपको बता दूं, मैंने वाइफ मेड दिस कमेंट. अ पर्सन बिकम्स पार्टी टू एन इलीगल एक्ट for joint benefit, mutual benefit, that could be one thing, or to aspire to an office, that could be another thing. But he's already got the office, or he can decline the office. There's nothing blackmailing. प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे, नौकरी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं. मैं गुजारिश करूं सर, मैं गुजारिश करता हूं, अब ये फैसला करना है. नहीं मेरा मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं डाल रहे हैं, कह रहे हैं वकार अहमद तुम विल बी वेरी. देखें मेरी गुजारिश फिर ये होगी कि मैं चाहता हूं कि आपने मुझे एक ड्यूटी असाइन की है. नहीं चले करें. मैं कहता हूं सबको समझ आ जाए. चले करें. मेरा टारगेट ये है, मेरा पर्पस ये है. ठीक हाँ, ये मेरा मकसद है. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. नो नथिंग सर, आई एम एट योर डिस्पोजल. आगे जी सुनिए. I returned to my office in this perplexed state of mind and called Mia Abbas. I repeated to him the orders of then Prime Minister verbatim. I was surprised to find that Mia Abbas was the least disturbed. He told me that I was not to worry about it, that he would see that the order of the Prime Minister would be duly executed, because he has already been reminded of this operation by my predecessor more than once. Mia Mohammed Abbas was Director Operation in the FSF. After the Prime Minister has given me these orders, he kept on reminding me, this is very important, kept on reminding me and goading me for their execution. This was done by him personally as well as on the green telephone through Mia Saeed Ahmed and through his assistant Bajwa. कैसी इंटरेस्टिंग बात. बाजवा भी आ गया, सईद भी आ गया, ग्रीन लाइन भी आ गई, और फिर भी साहब ने दोबारा को रिमाइंड कर रहे हैं प्लीज कर दो. और वो एक्सेस पे नहीं है ना. आपने एक काम जिससे करवाना वो तो बाहर बैठा हुआ है और बाहर राब्ता ही नहीं का है, वो उधर ही है, उसको बुला लेते. अब आगे देखिए सर. In August 1974, Mr. Ahmed Raza Kasuri was sniped at in Islamabad. Before the Islamabad incident and after the Prime Minister has spoken to me, I was asked by the Prime Minister to take care of Mr. Ahmed Raza Kasuri, who was likely to be Quetta. अब ये क्वेटा का इंसिडेंट है क्योंकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं. क्वेटा में शायद अच्छे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बात फिर इसका तो मेरा ख्याल में कुछ नहीं इम्पोर्टेंस नहीं है. अब मैं आप सही समझे हैं जी, आप सही समझे. अच्छा किसके बारे में? क्वेटा के बारे में. अब पेज 74 पे जनाब.
On the 11th of November 1974, I was at Multan. So was Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Very early in the morning, he rang me up. He said to me, "Your Mia Abbas has made complete balls of the situation. Instead of Mr. Ahmad Raza Kasuri, he has got his father killed." I was taken by surprise. अब ये सरप्राइज में आ गया जो अदरवाइज कंस्पिरेसी में है, तो उसने कहा कि मियाँ अब्बास ने ये क्या किया है। आगे कहते हैं, the Prime Minister hung up after telling me that he would summon me later. His ADC then called me at the residence of Mr. Sadiq Hussain Qureshi in Multan, where I was ushered into the presence of Mr. Bhutto, who had Mr. Sadiq Qureshi sitting with him. Most nonchalantly, Mr. Bhutto said to me, as if he has not talked with me before, "I heard Mr. Ahmad Raza Kasuri's father has been killed last night someplace in Lahore." I replied that I had also heard. Soon after that, when I returned to the headquarters, Mia Abbas informed me and reported me that his operation has been successful, but instead of a intended victim, his father Nawab Muhammad Ahmad Khan has been murdered at Lahore. As far as I remember, I left Multan in the same afternoon. I was summoned by Mr. Bhutto on our return to Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. I said to him, "This is very important, sir. Kindly look at a man." He said to me, "At your behest," I said to him, "At your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor, and the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore." ये इनके प्रीडिसेसर कौन थे? वाना साहब थे जी कोई। वो पेश हुए? वो फौत हो गए थे। नहीं इसमें मेरे ख्याल में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से दौरान या पहले फौत हो चुके थे, वो रिकॉर्ड पे आ गया। अब देखिए बंदे का किरदार कैसा है। एक तरफ कहता है जी सुन के तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मगर मैंने कन्वे कर दिया। दूसरी तरफ कहता कि नहीं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी अगला जी, वो असली बात आपने नहीं पढ़ी। वो पढ़ देता हूँ जनाब, पढ़ दीजिए। पढ़ देता। My parents hail from Kasur. My father and Mr. Ahmad Raza Kasuri's father were great friends. I had often met the deceased at my late father's house in Model Town, Lahore. We, the two families, had excellent relation. Any grudge or any motive on my part or that of my family against Nawab Muhammad Ahmad Khan or Mr. Ahmad Raza Kasuri or any member of that family never existed. नहीं, अगर इन बात मान लेते हैं दोस्ती थी, तो बुनियादी फर्ज था दोस्त का कि जाके फौरन इतला देता कि तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, यहाँ से गायब हो जाओ, छुप जाओ, कुछ कर लो, जान बचा लो। ये तो कहने में बहुत दोस्त था उनका। मैं तो अभी तबसरा कर नहीं रहा, मैं तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ या तो क्या मैं दोस्त नहीं था। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और ये बात अब चले प्राइम मिनिस्टर को ना नहीं कर सकते हैं तो दोस्त को तो बचा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को पहली मीटिंग में कह देते कि जनाब ये किसी और, अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको चुना ही नहीं जा सकता इस टास्क के लिए। प्रेसिडेंट के पास चॉइस क्या था, किस किस को वो रख सकता था, वो अभी मैं इंशाल्लाह ताला बाद में मेरे ख्याल में कल बताऊंगा। Although at the meeting I had with Mr. Bhutto after the murder, he piped down after hearing me there, and were other occasions on which he continued to goad me into getting Mr. Ahmad Raza Kasuri's assassination. Categorically said no. After that, attempts were made on my life, threats were held out to me, attempts were also made to kidnap my children from Aitchison College, Lahore. There were repeat performances of poisoning my food at Chamba House, Lahore, and I discovered that some of my own subordinates seems to have been bought over or won over. I had seen them lurking around the place where they should not have been when I आगे ये कहता है जी मैं कस्टडी में लिया गया और ये हुआ वो हुआ, मैंने बयान दिया, वो रेलेवेंट नहीं। अब सब इसमें मैं कल फिर डिटेल सबमिशन कर देता हूँ सारे इशू पे।
ठीक है जी, बिल्कुल सही। क्योंकि अब इसको बहुत ही ये इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो बयान है, अब इसका एक चीज आप नोट कर लें। आप कह रहे हैं इस बयान पे सजा हुई है, तो और किस बयान पे? और तो एविडेंस है सर, दूसरी एविडेंस तो है ही नहीं। भुट्टो साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो तो सारी corroborative है या सपोर्टिंग है। corroborative नहीं है, सपोर्टिंग एविडेंस है, corroborative नहीं है। और तो अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो एविडेंस इसको कोई मान सकता है? सर मुझे नहीं पता, कोई पता नहीं, कोई मान ही ले, मैं क्या कह सकता हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अमाइकस है ना, 4 लोग तो मान चुके हैं। आप अमाइकस है ना, इसलिए आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। ये इसका जवाब मैं ये देता हूँ, कोई भी सेंसिबल बंदा, कोई भी लॉ नोइंग बंदा, कोई भी रीजनेबल बंदा ये नहीं मानेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया? नहीं मियां अब्बास, मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, पिछले सुप्रीम कोर्ट की बात। मियां अब्बास का जो 164 का बयान है, उसमें उसने भुट्टो के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने तो कहा कि मुझे उसके जरिए डायरेक्शन, वो तो उसको तो माना ही नहीं गया ना जी, उसको तो निकाल देना। फर्ज करें अगर मान ले उसको, फर्ज करें माना ही नहीं गया, फर्ज करने फॉर द टाइम बिंग मान भी ले। नहीं, उसने नहीं ये बातें की, उसका कोई उसका बयान, क्योंकि जब कोर्ट में वो तो विटनेस पेश ही नहीं हुआ, वो तो विटनेस पेश ही नहीं हुआ, वो अक्यूज है ना, अक्यूज हो गया ना। 164 क्या है, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मुझे टवाने ने कहा था, टवाने ने कहा था। क्या उसका स्टेटमेंट, क्या मैजिस्ट्रेट जिसके सामने उनने ये बात की थी उसको प्रोड्यूस किया था? हाँ किया। तो फिर तो उसकी कन्फेशन वेदर वो रिकॉर्ड पे तो आया ना, उसकी अपनी हद तक जाएगा ना कि उसके बयान को हाई कोर्ट ने रिलाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये क्योंकि ये रिजाइल कर गया उससे, विटनेस बॉक्स में भी नहीं आया ना, फिर कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, जब विटनेस बॉक्स में नहीं आया तो 164 की नहीं हो सकता। नहीं देखें किधर है स्टेटमेंट उसका? कौन सा? दूसरे और उसका 342 का स्टेटमेंट है ना, उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। अदरवाइज अगर 342 पढ़ा जाएगा ना, अगर वो मलिक साहब अगर वो 164 को आप फॉर द टाइम बिंग एक्सेप्ट कर ले उसको, उसमें क्या कहा बात की? यार उसने 164 को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उसने टवाने का जिक्र किया कि मुझे टवाने ने कहा, टवाना तो आया नहीं, टवाना तो फौत हो गया ना। इसका जिक्र किया इस शख्स का, ये महमूद, हाँ किया उसने, तो किया 64 में तो किया। उधर वो उसने देखे, ये बेसिकली जो चीज आई वो वहां आई और ये सपोर्टिव है। नहीं सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एविडेंस आप तब मानेंगे कि इफ ही इज ए विटनेस। मलिक साहब इस तरह कर लें, कल कर लें, मैं सारा जवाब दे लूं सर। नहीं थक गए सर। नहीं, मैं जरा क्लियर कर लूं, वो सपोर्टिंग नहीं है, वो तो मानी नहीं किसी ने। एक शख्स एक अक्यूज कन्फेशन कर ले, बाद में रिजाइल कर ले, वो नहीं माना, आप उसके कन्फेशन को कंसिडर नहीं करेंगे? अगर तो वो मुल्जम को आप सजा देंगे ना कि उसके कन्फेशन में आप जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए रेलेवेंट है, उसको दूसरे के लिए रेलेवेंट नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा, मैं पैरा पढ़ दूंगा कि जो कन्फेशन मुल्जम का है वो उसके लिए है, ठीक है, वो दूसरे के लिए नहीं है। या तो उसको भी अप्रूवर बना लेते, मियां अब्बास को भी अप्रूवर बना लेते ना, फिर अब आप नहीं उसका बयान देख सकते। दूसरे के लिए वो सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है ना सर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर उसको सजा दे उस पे, उसके ऊपर। आप सिर्फ इतना बता दें, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने इस पर रिलाई नहीं किया, उसको डिसबिलीव किया है? नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अपना रिजाइन कर चुका है तो हम इसको नहीं मानते, नहीं मानते पढ़ लीजिएगा, पैरा निकाल लीजिएगा, वो निकाल देगा, जिन्होंने कन्फेशन किए हैं उस पे स्टेट ने अपील नहीं की। नहीं, कोई अपील नहीं की, उसकी क्या अपील करनी, स्टेट का तो काम हो गया, स्टेट का तो काम हो गया ना। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो पोजीशन जो है ना, उसका कन्फेशन उसके लिए है, उसका कन्फेशन उसके लिए है और उसको भी सजा उसके कन्फेशन पे नहीं मिली। आई एम एड्रेसिंग जस्टिस याहिया साहब, उसको भी सजा अपने कन्फेशन पे नहीं मिली, दूसरी एविडेंस पे मिली है। बस ये देखना कि क्या उसके बयान को, 164 के बयान को अगर डिसबिलीव कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो। मैं यही तो कह रहा हूँ जी, 164 का बयान उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, मैं कल दिखा दूंगा आप। ठीक है सर। अगर तो उसकी एविडेंस को वो बिलीव कर लेते कि ये 164 सही है, ये रिजाइल भी कर रहा है तो नहीं, मगर हम उसके मजिस्ट्रेट के बयान की रिलाई करते हैं, ये नहीं है, उसको भी सजा उस पर नहीं हुई। सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि मैंने जो रिजाइल किया था गलत किया था,
मैं फिर उसको सही मान रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब हम आपको मानते ही नहीं। उन्होंने उसको इंडोर्स कर दिया हाई कोर्ट के। वो अभी पढ़ देता हूँ मैं उसको। इसमें लिखिए लर्नेड माइकस जस्टिस मंजूर मलिक commenced his submissions assisted by लिखें या ना? सर बिल्कुल, ये इन 3 बंदों ने बड़ा असिस्ट किया जी। एक तो नाम बताइए, नाम ये खुद ही अपने लिखवा देंगे। नाम लिखा ये अंसर नवाज मिर्जा, नहीं हम इनका नाम लिख देंगे, ठीक है। assist by so and so. It is now 4 p.m. 4 p.m. Full stop. During his submissions, it was noted that there was also a complaint case before the High Court, but the learned amicus stated that filed by the complainant, namely Mr. Kasuri, but the learned amicus stated that he has not been able to locate a copy of the said complaint. Full stop. Mr. Kasuri, the complainant is in court, and in case he wants, and if he has a copy of the said complaint, he should file the same. ठीक है? इनके पास होगी ना? पता नहीं। आप अगर आपके पास है आप फाइल कर दीजिएगा। मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपके पास है फाइल कर दीजिएगा। आपको भी सुनेंगे। जी। Since the very prominent judges of this country who have died, it seems that they are on trial. I think notices should be given because somebody should protect their image and their reputation, because a lot is being said about them. They have died, but their successors should be given notice by this court. But let us correct that they are certainly not on trial. We are dealing as per our duty under the Constitution, attending to a presidential reference. These proceedings are broadcast live. These proceedings are well reported in the media. If anyone wants to come forward, they can do so. No, please, now you said something. Now have the. They may not come on their own, but if you formally invite them before this honorable court, and I think they were very prominent judges. See, all of us must be in our 20s. At that time, they were the judges of this superior court. Dealing with law. And they are being discussed.